Good morning, Vikas. Good morning, everyone. Today, we are very fortunate to have this kind of discussion starting at this point in time in this city of Indore, because Indore has been considered as a city which is developing only early stage startups, and it's not doing a fab job. But I'll tell you that we started in 2016 in Indore on 8th of January 2016. I believe I'm audible to all. If yes, please mention yes. Uh, so in Yes. Thank you, Vikas. So in 2016, we started working on these things like formally with the launch of Srajan. 8th January 2016, we launched Srajan, and startup journey of the state of Madhya Pradesh started from that day only. Okay. Though we were trying to convince government since 2013, October 2013, but it took 2.5 years time to convince government and start things. Then till now it has not been even 10 years, and we have 4,000 plus startups registered in Madhya Pradesh and around 800 in Indore itself, which is a good number, very healthy number, and very encouraging. Now we have come up to the stage wherein these startups have not only just grown, these people have grown to a fabulous number of 100 crore. And Vikas is one of the forerunner in the entire game, because he started, I believe, his startup in 2017 or 18 in Srijan. And today he is running a 150 crore rupees valuation company, and we are proud of him. I requested him to take out some time out of his busy schedule, because he has been doing his business in now 2, 3 countries and managing a team of around 270 guys. So, in this entire thing, he has done a real great job, because in last 5 years time, not even complete 5 years, but even 5, 6 years, if you develop a 100 crore rupees company, that is a phenomenal thing. So I wanted Vikas to come over here and share his learnings with the group. And I believe it is Sunday morning, and that's why people are like around 35 people registered so far. So they'll be joining in between. Uh, by the time these people join, I'll tell you what we are doing over here in Vedic ecosystem, so no one miss what Vikas has to share as a founder of such a fabulous company. There are a few things that I really want to tell that in Vedic ecosystems, though the ecosystem of Madhya Pradesh has grown fairly well, what we have observed is there are certain lakes which government cannot fulfill even if it tries to its level best. In spite of being government consultant, I know it is beyond government. One is the technical nitty-gritty of the business when it comes to give the proper handholding. Government can bring you investors, but it cannot train you on the step by step on your personal level to become investable. That was the first observation that I had. Second thing is that strategic alliance and strategic consulting is something which is not possible for government, and which is not possible even for startups to afford the strategic consulting guys in their companies, because they are very expensive. So being a strategic consultant, I was seeing that this is the second gap that we are seeing. Third thing is that the gap of knowledge, that most of the startup founders do not know even what they do not know, and they pay very dearly because of that thing. So when it was happening, I was seeing among these startups very regularly that they are facing real challenges. So I thought कि ये एक बड़ा problem है. Fourth thing I observed is that the kind of networking that they need, that is not taking place, because in networks what happened that you have some people whom you know,
but you don't need them, but you don't know the person who is very much required in your company. So there are certain these gaps: knowledge, network, no, training, and then step by step guidance, then the strategic moves. These all things I was observing, and that's why we decided to take this step to develop Vedic ecosystem for Indore and this kind of like Madhya Pradesh and all. But there is one thing that we observed, that there are people who are from the remote area of the state or remote area of the country. They are also getting benefited because they have not access to even that much of resources that we have in Indore or in Bhopal or in Delhi or in Mumbai. So that is again a very good benefit that we are sharing with these guys. So this is a very cohesive group. You can join this group and you can leverage all these benefits just on a fraction of the cost you pay to a consultant. That is like 3,999. When we launch our webinar, we actually share these things with you. I'd request my team to share in the end the link to join the people if they want to. Then there's one thing that all these startups who have grown, they also want to help people who are coming after them and who are developing their startup, and they are not able to because they are not connected with each other. So this all features I've seen, and I wanted to develop in one ecosystem. That's why we have this online ecosystem of startups and entrepreneurs that is called Vedic ecosystems. And we are proud to have Vikas with us. विकास के मामले में एक दो इंटरेस्टिंग चीजें मैं आपको बताऊं कि जब हम इनकी कंपनी डेवलप होते हुए देख रहे थे तो हमको बड़ा अजीब लग रहा था. लाइक आई वाज द गाय हु बिलीव टू स्टार्ट अ बिजनेस फ्रॉम सेल्स, not from the product. So Vikas was developing a product for, I believe, more than 1.5 years time without any sales in front of me, and he was actually paying heavily to all his guys were very highly paid when he was in Sweden. Then the second thing that one day Vikas told me, sir, classmonitor.com लेने के लिए मैंने शायद 1 या 5 लाख उसने उसे बताया था. Now he'll share today that just name for classmonitor.com, he paid heavily just for the domain name. And then he put everything on the risk, and he involved very good guys. So I was very amazed that why he's doing that thing, and what if he fails, and what if the things do not click. And his ideas were very strange at that time because he was actually trying to work with kids, and I was not sure कि इंदौर के पेरेंट्स उस तरह की चीज के लिए रेडी हैं. I had my own concerns, but Vikas had that kind of zeal and passion, and he involved really great guys. And then he started shelling off early stage equities, which I again do not endorse. मेरी कंपनीज को मैं हमेशा बोलता था कि अर्ली स्टेज में इक्विटी डाइल्यूट करना इज वेरी डेंजरस. बट बिकॉज वॉज somebody who brought money on the paper itself, आइडिया पे उसने इन्वेस्टमेंट उठाया. And there were many things that I thought that it is very risky or very dangerous to do. And Vikas did all of those things and made a brilliant company out of it. So मैं हमेशा से सोचता था, मतलब पिछले 2 साल से मैं सोच रहा था कि किसी दिन ऐसा मौका पड़ेगा तो मैं विकास के ऑफिस जाके ये सब समझूंगा. फिर लास्ट टू लास्ट कम्युनिकेशन में आई बिलीव 3 वीक्स बैक Saurabh ji told me in our inner circle, Mr. Saurabh Singh is there, he's City Bazaar Online's founder. He told me, sir, why don't we have the discussion with these guys who have been very successful? So first name that clicked in my mind was Vikas, because I really wanted to learn how did he manage all these things which I considered very risky, very dangerous, and he developed a brilliant company out of that. And I'm really proud of him that he proved me wrong in many stages of his career. So I really want to listen because he has a very different roadmap of doing things. So I requested him to develop that roadmap for our startups, and we all can learn and enrich our mind. See, when you see what you can't see with the help of some people, then you actually develop an insight which you did not have. So I really want, Vikas, you to develop
or to show us that what you were seeing that in 2018-19 time, and how did you manage all these things? Because तुम्हारे expenses उस टाइम salaries के इतने थे जितने मैं साल भर में लोगों को उस टाइम सजेस्ट करता था 6 महीने में. Monthly expenses were salary were that much. So over to Vikas. Now this is a good enough introduction. Vikas, over to you. Let's go ahead with your ideas. Yeah. Good morning, everyone. Good morning. Good So morning. yeah, good morning. So yeah, thank you for your kind words, Vikas. It has been a journey. So it has been a good journey so far. Like I very vividly remember joining the Srijan IT Park Incubation Center early, I would say 2017. Yeah. So the- I'll keep this like webinar on two agenda. Okay, one is like uh, of what I understand, the most of the attendees here are budding entrepreneurs. So so I'll keep it as a journey of myself, a reflection upon that how we build ClassMonitor, and I'll share my insights very closely of my own journey, what it had been. I'll try to keep it as simple as possible, and then we have, as the title of the webinar suggests, a roadmap of funding, like roadmap of the funding. That how do you grow your idea from, like, grow the idea to the success? Okay, and what is the reality out there in the market? So a brief intro about myself. I'll start with that, and we'll keep I'll keep the webinar in a mix of the pitch, and I'll keep adding my own experiences in the mid. So about myself, like I'm basically from Lucknow. Came Indore to study. Got admission into DAVV, scored some good rank, so went into IIPS, and that's how I came to Indore. Before landing Indore station, I had never in my life heard of Indore. But once I landed here, it's almost been 20 years, about to be 20 years now, 2 decades. I am here. This city has embraced me like anything. And why I'm talking about a bit Indore here is because location is one thing that matters a most in the journey of an entrepreneur. And I'll tell you how. So coming back to the thing, I enrolled my MBA. It was an integrated program. Learned that I'll have to get hands-on experiences while I am in my college, because college was just teaching the bookish language just enough. So I was always involved into, like, freelancing. I was always involved while I was in college. I was always involved into freelancing, getting projects. So it helped me in two ways. One was, like, helped me manage my finances, and the other is made me learn a lot of real practical life things, how things work in practical life. If you have to earn, how do you earn money? So that it was teaching me. Uh, so while I was in college, in my final years, I got an opportunity to be the early team member of Oyo Rooms. If you would have, like, everyone would have heard of Oyo Rooms. So on the records, I am the second person in the team Oyo Room, just after Ritesh Agarwal. He is a good friend of mine. We together created the very first version of Oyo Rooms that was known as Oravel.com. So we wanted to create Airbnb of India. We ran it for a year, and then pivoted to Oyo Rooms. In year 2012, Ritesh Agarwal went to US for Peter Thiel Fellowship, and then I came back and joined a product manager job in Indore. So, but I had a good learning experience of seeing how the things really worked at a $5 billion, which, like, startup Oyo Rooms, which is right now valued at almost $5 billion. So what were those early days? Like those scrappy days wherein there are two geeky guys, nerdy guys, just in a room and talking about ideas, and how ideas that are so small can scale to 50,000 crore valuation. So that is one good insight I have. And then after few years working as a product manager, getting some hands-on experience, I always had this itch of starting something of my own. So in 2016, I, like, after multiple iterations,
I started ClassMonitor. Okay, so ClassMonitor is like a early education platform. We wanted to revolutionize how the early education was happening in India. So we did something around that, and right now we can very confidently say that ClassMonitor is among the top three early education brands in India. We sell across the world, and we are exponentially growing year on year. We are currently over 300 plus full-time employees spread across India. So that is a bit brief of me. Now, coming to the agenda, okay. So of the webinar, that is like understanding the funding life cycle. What are the various stages? What is the key requirement at the each stage of the funding cycle? And what are the strategies that you can apply on the each stage of funding cycle, and then preparing for growth and long term like exits. So let's come to very first fundamental. Why do you want to start up? Why? Like, ask yourself why. uh, I very vividly say, and this myself I have experienced that, like, you need to be very clear about this idea in your head, that why do you want to start up? Is it your passion about something? Is it the passion about the idea? Is it passion about the lifestyle? Yes. Not many people admit, but these days it's a lifestyle status as well, that I am a startup, I am an entrepreneur, I am a founder. Or is it about being like, you want to make your aspirations and dreams come true, like you want to be real rich, like you go do a Forbes study, uh, and figure out how many self-made startup like entrepreneurs have come across in the past times, and most of them, the self-made, are entrepreneurs, and mostly from technology, those who are self-made. So, like, these are three broad things why you want to start up. So you need to have that clarity. Why you need to have that clarity is because one thing is, like, startup is a journey that is way longer than you anticipate. You anticipate that you will come up with an idea, you will create it in 6 months, you will launch it into the market, you will get your 100 customers, next 1,000 customers, next 1 lakh customers, you will scale it up to 1 crore, 10 crore, 100 crore, and you will be rich. No, that doesn't work in that stream ways. It is a journey of a lot of ups and downs. So you need to be very clear on your idea of why are you starting up, so that when there are ups and downs, you can be straight on the path and you can look for the horizon. Okay, so starting up, I would say, is just again the 21st century fancy words for starting a new business. Like, you are just about to create a dhanda. That is, like, you have to have this clarity in your mind that you are here to make money, you are here to earn money. And why starting up is much more difficult than doing a job, because when you are starting up, you have to employ other people, you have to pay them salaries, you are liable to pay the office bills every month, whether the business makes money or not. It doesn't matter. But if you have employed 5, 10, 100 people, you have to pay their salaries. That is why you are liable for 100 other lives. So whatever the fancy thing it may be, you need to be very clear that you are up for this battle. Now, as I say, that this is a battle, this is a very long journey, but with some planning and proper uh, in-depth research, you can make this journey a bit easier. Okay, and there are various factors to make it easier. I would say one is all obviously your teammates, your partners, your co-founders, that uh, your colleagues around you make the journey smoother for you. Second is your advisors, your investors, your partners. In that way, the ecosystem that helps you a lot if you are in the correct set of people. And that is why you see San Francisco being the at the epitome of the world of startups, and Bangalore in India being at the epitome, because there you have that ecosystem that helps you uh, in the ups and downs. So, and the third one is having the access to resources. Okay,
What I mean by resources is simply people and money. Okay, to even have people, you need money. How does that money come across? Okay, how does that money comes to you? You are a nerdy guy, you are a student, uh, with some crazy ideas popping up in your head, and you need to implement it. But to implement it, you need resources. If you want to start a technical startup, you need a code, you need a website, you need a development team, you need everything. You need a mobile app, you need a website, and for everything you need developers, you need money. You then once you develop it, you go into market, you need marketing funds. You need to run Facebook ads, Instagram ads, social ads. You need to do SEO. You need to do set up booths at event. Everything needs money. Okay, so how does that money come? Now money will only come when your idea sells. Okay, right? When you start selling the idea. But now how do you sell the idea? You To sell the idea, you need to create it first. So it's hen and a chicken kind of, egg and a chicken kind of problem, that like first you need the product, or first you need the money, and that's how the things work. So therein comes the idea of this entire funding. Okay, so now, broadly speaking, there are two ways of doing the startup. One is bootstrap, one and the other is raise funds in externally. Okay, bootstrap, very simple. You have your own funding, and you have your own savings with which you fund the startup, and then you do not raise any equity. It has its own pro and cons. We will talk that later down the line in the webinar. But that's a good way to do business. A slow, steady. The pro is you own the entire business. You're not answerable to anyone. But the con is you are putting everything at risk of your own. So you are putting all your savings, whether it is your own earned, or the family inherited or something, or you even take a loan, that also counts to a bootstrapping a business. So the risk factor increases many-fold. Okay, then there is another set of uh, way of raising funds, that is like by raising funds externally. You go to people, you go to the market, and you do the business. Now, again, giving some perspective for the second type of fundraising, that is raising the funds externally. uh, for the student, when I was your age, I'm considering my audience as almost like graduating students or school students or college students, whatever, pretty much early in the journey. So I'll give you a perspective that what kind of mindset we do have when, like, I was your age. Okay, so 10 years back, when I was like very enthusiastic and I was like, koi mere ko 1 lakh de de, and I will just kill this world, I will just rule this world. Okay, and I had too many connotations about कि fund कैसे raise करें. Like if I raise funds, I will lose out my equity, I will lose out my power, I will lose out my own startup, which is my own baby. They will come and rule me. So all these connotations were into my head, like it was all filled up. So I'll give some clarity, try to give some clarity on that as well. Uh, because we have to adapt with the changing world. So early on, go back in 80s, 90s, or even 200s, like 21st century, like how did all the big budding startups you see around your your in the society, even let's not call them startup, let's call them business. Okay, Kotak Mahindra Bank, it's like almost a 3 lakh crore company. How did that start up? How did that business grew up? So go any business around, and you just try to figure the story, and you will see that every one of them at any point of time needed some external money to grow, to catapult their growth. Like imagine a car is running down the hill. Okay, yeah, a car is just going down the hill, it is easier, it is going with the flow. But once you have to go up the hill, you will have to apply the accelerator, otherwise it will start going back. So same in the journey of the startup, there are situations wherein you need to put the accelerator, and that accelerator is sometimes resources, money. And where do that come from? So that is what the agenda would be ahead. So we'll start discussing that. So now, like a brief overview of how the entire funding life cycle looks. I have just briefly
put it into five categories right now, five stages right now. There are many mid stages. This is just a very broad blueprint that we would be discussing. Every startup will have their own journey, but broadly, this is what is accepted. And then I will try to put some correlations with my own journey at ClassMonitor in these stages. So the very first angel, that is what we call angel round, then the seed round, then the pre-series A, series A, and then after series A, you have A, B, C, D, E, F, G, and whatnot, whatever your capacity is. In India, there are startups like Flipkart who have gone to series E, F, G, H, I, J before they IPO'd. So this is the entire journey. Okay, before we go forward, I will just give you a brief of overview of how this external fundraising happens. Okay, like all of you would have heard of Sensex. All of you have heard of share market, right? We have NSE and BSE stock exchange. So similar to those public IPO listed companies, wherein you go to a portal, say Zerodha or any stockbroker, and you can purchase the number of shares listed over there. You pay the amount. Say for Reliance, right now it is somewhere around 1,500. One share of Reliance is 1,500. You punch in the order on Zerodha, say for 15,000, and you get 10 shares. Okay, and they come into your demat account. So these are called public listed companies because anyone from the public can go and buy those shares. In the similar way, exactly in the similar way, when you start any company, you create a pool of shares. Okay, a pool of share is created from the day one. Like day one, you go to the Government of India, MCA, Ministry of Corporate Affairs, and you register a company. A pool of share is created. Okay, say 10,000 shares is being created on day one, and the ownership is set on day one. That in India you need to have minimum two directors when you are registering your company. So the ownership is distributed between two people. One people can have 99.99% of share, other can have one share as well. But you need to have two people in start, and that is how the company starts. Now, when you try to bring someone from external, okay, any resource, be it the team, be it any money that is coming in. So I am sorry. So I'm Vikas. Okay, I came up with the idea that I will create the next teleporting machine. Okay, you sit here in Indore, and in a single button you can go to Lucknow. Okay, I'm creating a new teleporting machine. I created all the R&D, all the stuff. I have everything in my head. I have the technology patents, but to experiment it, to build it, to scale, I need this money. I need money. Okay, I need. So what I'll do is I'll go out. I'll prepare my own plan. I'll prepare my own. And this is the journey now we'll follow ahead while we are discussing. So we are creating a teleporting device today. We are inventing that. So in the angel round, what happens is. Uh, what I'll do is I just have an idea. I just have an idea and I have a blueprint. Okay. And everything is into my head. Now I want to go and create it. Now I want to make it happen. How do that happen? Like I'll have to develop a prototype, right? I'll have to show something. So, but I do not still have anything right now. So this is where the angel round comes in. And this is where I believe, I'm just assuming that most of the participants today are falling into this stage. If they are falling into this stage, I have been into this stage for almost 5 years, wherein I was just looking for an angel investor. I was just experimenting ideas, what to do, what not to do, what will work around, what will not work around. So the toughest of all is this angel investment. I would say this is the toughest. In like, see, as I said, startup is a very long journey, and every day is a new struggle. But have this patience in your mind that tomorrow will be less struggle than today what we are having, and this is how it goes on. So in angel investment, the biggest struggle is that you do not have anything tangible to show to the market. You have everything in your head, you have everything on the paper, you have everything written down. Okay, a perfect business plan, a perfect projection plan, everything perfect, but nothing to
show. And as I said, that now you have an idea of this teleporting machine. I want to assemble a team of technicians, technologists, and want to start creating. But to hire them, I need money. I need money. Okay, and how do I put that? So therein, what comes is angel investment. And angel investment, as the word suggests, angel. Okay, he he or she is just an angel for you. Okay, he is not believing as much as in your idea as he is believing in you as a person, as a founder. That is why he is the angel. Okay, so if he has to believe in you, okay, and not that much in the idea, then you need to have an rapport with that person. Bhai, like imagine this as a way, like you go to a bank and say, bank, I have this 100 crore idea. If it works out, please give me 10, 50, 20 lakh rupees. And if it works out, I'll give you 10% of the company. No, they'll say, just go away, because they have their another level of risk profiling. Now, but still to start, you need something as a benchmark, right? So for angel investment, what works the best is you try to crack your own network. Okay, you try to create your own network of high net worth angel investors. Okay, and it may sound thoda sa trivial, but it is practical, and this is how actually the world works. Is इस स्टेज में क्या होता है, the risk for the investor is the highest, but if it works out, the returns for the investor are just insane. Like it can be 10x, 20, 100x kind of money that this investor can make. So if this investor, for example, invests say 10 lakhs and the startup works out, he can even make 10 crore from that 10 lakh. That kind of returns we have seen in the ecosystem. So how do you search these angels? Okay, they only come from connections and nowhere else. Okay, आपको connection बनाना पड़ेगा. You will have to go on ground and you will have to look for the connections, the people who can just help you with this round. In our case, ClassMonitor, I'll share you a very true story of who were my angel. So as I told you, when I was in Oyo rooms, after that I left Oyo room and came Indore and joined a company as a product manager. Okay, so when I was working in that company as a product manager, I used to deal with lot of foreign clients. Okay, from US, UK, America, Europe, Germany, Sweden, everywhere, everywhere. And you would be surprised, like one of my angel was my like one of the angel that came very early on, which made this ClassMonitor happen, was my client. So he was a scientist from Sweden. He was a chemical surface chemistry scientist, and he came to my company as a client, wherein he was developing a social network for all surface chemistry scientists. Okay, so he was developing that, and he gave the project to my company. I was the senior project manager on that project, and I led the entire project for him. And we used to have regular conversations about his project, nothing about personal, but about his project. And that project went for almost 1.5 year in that company. So in that 1 year, 1.5 year, I developed a very good rapport with that client. We had a very good rapport, and he knew that what I was good at. He knew what I could do, what I could not do. He knew me inside out, because it was a long journey we have been. So one very random day, once his project was delivered and we were having a review call, he just asked me about my future ideas, that what do I want to do ahead. And I was like, I might start something someday. And he just asked me, what's stopping you? I said, I don't know. I am lingering upon some ideas. But yes, like if I can save enough money, I can start up. And he just asked me, like, how much money do you need? And very randomly, I just came up with a number, 5 lakhs. It was just out of blues. Matlab, I didn't knew anything about that. I didn't put much thought. I said, if I get 5 lakhs, I'll just create the next Facebook. I'll just create the next big thing of India. And he just said that, and he said, done. I'll invest in you. Just you send me the terms of what you want to give me,
what will be the valuation, what is the idea, we will finalize over it, and we can go it. 5 lakhs is not a big amount. So that is how I got my first angel. And the very next day, he transferred me 5 lakh rupees. The very next day, I resigned from my company. And that is how the journey of ClassMonitor went ahead. So you never know. They are real angels. They can come from anywhere. You have to be wide and open. Okay. You have to keep talking to the people around you. And there are many people, trust me, there are many people. I would say there are less entrepreneurs with good idea. There are less people with good ideas in the market. Then there are people with heavy pockets. They literally want to invest. They have money literally into their bank. They're holding it. You just go and see in the market. People have made a lot of money, and they want to multiply that money. Okay, so for all the budding entrepreneurs, I would say there is a lot of angels in the market. You just need to go and figure out them. So, so that is what my angel was. His name is Eric. He is still on the board of ClassMonitor, and he is almost 25 times, 25, 30 times more of what he has invested in ClassMonitor. So you never know how where you find your next angel. So coming to the point, what is the purpose of the angel investment? The idea is to validate the idea and create a minimum viable product, so that once you raise the funding in angel round, your sole purpose is to create the MVP जो तुम्हारे दिमाग में है उसको, like you have to now bring it on the table ताकि लोगों को दिखे. अब तुम ये बात ना करो आफ्टर एंजल, योर एजेंडा शुड बी कि मैं ये कर लूंगा, मैं ये बना लूंगा, मैं ये बनाना चाहता हूं. यू शुड बी लाइक मैंने ये बना दिया है, दिस इज व्हाट आई एम वर्किंग अपॉन. सो दिस prepares you for the next round of your journey. Okay, so this is the main function of the angel investment. ठीक है भाई. Now you raised angel investment. Typical size in India, in Indore, I would say is 5 to 20 lakhs. Okay, again, all these numbers journey I am depicting from my own perspective, that is from Indore location. Okay, that you are a budding entrepreneur from Indore area or tier 2, tier 3 kind of area. If you go and do the same thing in tier 1 city like Mumbai, Delhi, Bangalore, numbers would change because वहां पर resources के cost and your cost of operations increase. So that is why location also matters a lot. Okay, and we will discuss this point of location later down the line. So you raised 520 lakh rupees, you created an MVP, and you created something, and that is clicking, and that is now into the market. आपने demo देना चाह रहे हो, you started giving demos to the people, and they are liking it, and people are now subscribing to your service. They are subscribing to your idea. They are willing to ready to pay for your idea. Okay, so हम यहाँ पर teleporting machine बना रहे हैं. So we assembled with this small angel round. We assembled 2-3 developers, and we created a prototype कि यहाँ से this is a wide screen, and you look it into it, and you will start teleporting into Lucknow. So and it is still very scrappy. Okay, MVP means minimum viable product. It does not need to be perfect. Okay, it is just you want to prove your hypothesis that whatever you want to do is practical and is sellable. उस पे business बनाया जा सकता है. That is the main idea of this angel investment. Now, I'll go to the next. ठीक है, angel हो गया. You created the product. It is now looking that whatever you are creating is on the perfect lines. It is clicking with the market. You now know that जो भी प्रोडक्ट आपने बनाया है that has a specific demand in the market, and there are a lot of prospective customers who are willing to pay to the market for that product. अब when you start selling to the mass, अब आपका प्रोडक्ट स्क्रैप ही नहीं हो सकता, राइट? आपका प्रोडक्ट शुड फंक्शन वेरी परफेक्टली. मतलब यू कैन नॉट सेल कि ये नहीं चल रहा है, आपने वेबसाइट बनाया और वो अटक रहा है, वो क्रैश हो रहा है. This cannot happen because then you will lose your business and you will lose your brand reputation as well.
सो फिर उसके लिए फिर आपको पैसा चाहिए, बिकॉज अभी आपका जो बिजनेस, जो आपका प्रोडक्ट है, जो बिजनेस है, इज नॉट मेकिंग मनी, इट्स नॉट मेकिंग मनी, यू आर जस्ट स्पेंडिंग, यू आर जस्ट गिविंग आउट सैलरीज। तो वो मैंने 20 लाख उठाए, वो तो खत्म हो गए 4-5 महीने में, 6 महीने में। नाउ व्हाट नेक्स्ट? सो देन वी अगेन गो टू द मार्केट एंड देन वी डू अ सीड राउंड। ओके, अब सीड राउंड में क्या होता है, व्हाट हैपेंस इन द सीड राउंड इज कि ये यू हैव सम श्योरिटी ऑफ द आइडिया। ओके, आप सिर्फ बातों में बात नहीं करते हो, आप हवा में बात नहीं कर रहे हो, यू हैव समथिंग टू शो। ओके, सो आप क्या अपनी वैल्यूएशन को थोड़ा सा बढ़ाते हो। ठीक है। यस, एक और चीज जो बहुत हम लोग भूल, एक एक मेंशन करना था, एक वैल्यूएशन भी एक चीज होती है, दैट इज व्हाट द एजेंडा इज लाइक, जर्नी टू 100 करोड़, कि आप 100 करोड़ की वैल्यूएशन तक कैसे पहुंचोगे। ओके, सो एंजल राउंड में द वैल्यूएशन इन इंदौर टिपिकली होवर्स अराउंड 2.5 करोड़ से 5 करोड़, लाइक दैट इज व्हाट आई हैव फेल्ट अराउंड, कि समवेयर बिटवीन 2.5 करोड़ से 5 करोड़ की वैल्यूएशन आप स्टार्ट करते हो, इफ यू हैव अ स्केलेबल आइडिया, इफ यू हैव आइडिया रोड मैप वेयर इन यू कैन शो दैट ये 2.5 करोड़ से मैं 250, 500, 1,000 करोड़ की कंपनी बन सकती है। आपको 2.5 से 5 करोड़ का मिल जाता है। क्लास मॉनिटर ने जो सबसे पहला राउंड लिया था वो ऑलमोस्ट 2.5 करोड़ का था, आज से 8 साल पहले। तो वो वैल्यूएशन, जब मैंने सिर्फ आइडिया बोला था कि दिस इज व्हाट आई वांट टू डू एंड व्हाई डोंट यू, मतलब गिव मी 5 lakhs, एंड द गाय गेव मी, सो दैट वाज लाइक वेरी रफ मैथ्स, एंड 2.5 करोड़ के आसपास हमने इन्वेस्टमेंट किया था। सो नाउ कमिंग टू द सीड राउंड, अब आपके पास एमवीपी है, थोड़ा सा ट्रैक्शन है जहां पर दिख रहा है कि हाँ यार ये लोग चीज यूज कर रहे हैं, तो यू गो फॉर द नेक्स्ट राउंड ऑफ ग्रोथ, कि अब मैं डेवलपर्स और हायर करूंगा, अपनी टीम हायर करूंगा, ये जो मेरा प्रोडक्ट है जो स्क्रैपी है, जो थोड़ा सा क्रैश होता है, थोड़ा सा अनप्रोफेशनल लगता है, मैं उसको थोड़ा प्रोफेशनल करूंगा। सो उसके लिए मुझे कितना रुपए चाहिए? आई नीड टू रेज 25 to 1 करोड़ की रेंज में मुझे पैसा उठाना है फॉर द नेक्स्ट लेग ऑफ जर्नी। ठीक है। सो इसमें क्या चाहिए, लाइक इसमें यू नीड अ फंडिंग टू प्रोडक्ट मार्केट फिट एंड स्केल देम टू द थीम। पर्पस है मेरा टू प्रोडक्ट बिल्ड द प्रोडक्ट, गेन अर्ली यूजर्स एंड रिफाइन मेरा बिजनेस मॉडल को और रिफाइन करना है, प्राइसिंग रिफाइन करनी है। ये भाई चीज जो मैंने बनाई है टेलीपोर्टिंग मशीन, ये मैं 1,000 रुपए पर मंथ में बेचूं कि मैं 5,000 रुपए पर मंथ में बेचूं, मैं कितने में बेच पाऊंगा, मैं किस मार्केट में बेच पाऊंगा, मेरे मार्जिन क्या रहेंगे, मेरा सेल्स स्ट्रैटेजी क्या रहेगा, मेरा जीटीएम क्या रहेगा, मेरा सीटीसी क्या रहेगा, मेरा कैक क्या रहेगा, मेरा एलटीवी क्या रहेगा। ये बहुत सारे टर्म्स होते हैं कि भाई मैं गो टू जीटीएम, गो टू मार्केट, मैं मार्केट में पहुंचूंगा कैसे, मेरा कैग, कॉस्ट एक्विजिशन पर कस्टमर, मेरे को एक कस्टमर को एक्वायर करने का कितना रुपए लगता है, एलटीवी लाइफ टाइम वैल्यू, मेरे को एक कस्टमर को एक्वायर करने के बाद वो मुझे पूरी लाइफ टाइम में कितना रेवेन्यू देके जाएगा, मेरे ग्रॉस मार्जिन क्या है, मेरे नेट मार्जिन क्या है। सो all these things need to figure out in the seeds round। सीड राउंड कहां से उठाएं? सीड राउंड के लिए भी अब इफ यू गो इन द मार्केट इन इंडिया, पर्टिकुलरली अराउंड इंदौर, अगेन टॉकिंग अबाउट इंदौर, when we started it was difficult, 8 years back, 10 years back it was very difficult, market was very early I would say, but now market is very mature, like, so there are a lot of small micro VCs and seed funds specifically in India which do seed funding. Okay, so how do you approach them? You join startup networks and pitch events. That is where you will find these seed round investors. ओके, सीड राउंड इन्वेस्टर्स को क्या चाहिए? दो चीजें चाहिए होती हैं सीड राउंड को। सीड राउंड को हवा में बातें नहीं चाहिए, सीड राउंड नीड टू सी, इन्वेस्टर्स नीड टू सी सम ट्रैक्शन। उनको दिखना चाहिए कि तुम्हारे पास कुछ है, यू हैव समथिंग इन योर हैंड विच यू कैन डिलीवर टू द कस्टमर्स, एंड दे नीड टू सी द मैथ्स, कि ये मैथ्स कैसे मल्टीप्लाई होगी। कि आज तुम अगर से इफ यू आर रेजिंग 1 करोड़, ओके, एट 10 करोड़ वैल्यूएशन, ओके, सो probably they are, so ideally they are getting 10% of the company, और आपने 10 करोड़ पे उनको बेचा, की वैल्यूएशन पे बेचा। सो हाउ विल यू मल्टीप्लाई दैट टू 100 करोड़? यू हैव टू शो देम मैथ्स कि ये मेरा एलटीवी रहेगा, ये मेरा कैग रहेगा, मैं 100 रुपए में कस्टमर को लेके आऊंगा और इस 100 रुपए के कस्टमर से मैं 500 रुपए कमाऊंगा पूरी लाइफ जर्नी। तो दिस इज व्हाट द मैथ्स यू नीड टू शो। हमारे केस में नाउ अगेन विद द टर्म्स ऑफ क्लास मॉनिटर, सीड राउंड में we again got lucky wherein we raised the seed round of almost I would say 80 lakh rupees from an NRI. Okay, the name of that NRI is Piyush.
He's still on the board of ClassMonitor, holds a good amount of equity in the ClassMonitor. So he is an NRI. He's a certified CA, gold medal ranked CA, and he works in Oman. But he is natively from Indore. So before investing into ClassMonitor, he was investing all his savings into land, real estate. So somehow through our internal connections, we got to know that he is a rich Indian, and he is always investing into land and every place. How do we came to know about it? Through our common circle networks, wherein one of our friend had a connection with the branch manager of who was handling the bank account for and these investment cycle for Mr. Piyush. So he just introduced us that why don't you start investing in this new asset class of startups? And you would be surprised, for Piyush, ClassMonitor has been his very first investment ever. Okay, and till date he has invested into 35 companies, other companies, and he is predominantly a seed round investor. Okay, सीड राउंड में अगेन क्या होता है, रिस्क थोड़ा सा हाई होता ही है ऑब्वियसली, बिकॉज अभी आपके पास सिर्फ एमवीपी है, आपके पास कोई रेवेन्यू नहीं आ रहा है, सो देर इज अ रिस्क, हाई रिस्क, बट इफ इट वर्क्स आउट इट रियली गिव्स यू अ गुड रिजल्ट. ओके, और एंजल से थोड़ा सा कम होता है, बिकॉज एंजल में यू हैव नथिंग. कल को इफ समवन फंड्स यू इन द एंजल राउंड एंड नथिंग वर्क्स आउट, यू हैव नथिंग. सो एंड सो सीड राउंड में वो रिस्क थोड़ा सा कम होता है. सो टारगेटिंग द माइक्रो वीसीज एंड सीड फंड्स, स्टार्टअप की नेटवर्क्स ज्वाइन करो, जैसे कि अपना वेदिक है, और भी बहुत सारे हैं, टाई एमपी है, बहुत सारे हैं. एंड देन जितने भी स्टार्टअप इवेंट्स होते हैं उनमें पिच करो, काफी लोग आते हैं इंडिया में. इन जनरल द सीड राउंड इन्वेस्टर्स हैं, उसका इकोसिस्टम इज ग्रोइंग अप रियली वेल. सो नाउ इट इज नॉट अ प्रॉब्लम कि इफ यू हैव अ गुड आइडिया, गुड टीम, यू कैन रियली अरेंज सीड राउंड्स. कमिंग टू द नेक्स्ट, सीड राउंड हो गया भाई, 1 करोड़ उठा लिया आप, 1 करोड़ की फंडिंग आपने उठा ली, अब क्या करें? ओके, आपने नई टीम हायर करी, यू परफेक्टेड योर प्रोडक्ट, आपने परफेक्ट अपनी प्रोडक्ट को परफेक्ट कर लिया, जो भी स्क्रैपी था वो प्रोडक्ट परफेक्ट हो गया, आपने आर&डी हायर करी, आपने मार्केटिंग टीम हायर करी. नाउ यू गो टू द नेक्स्ट लेग ऑफ द जर्नी. यहां पर क्या होता है, यहां पर हम लाइक व्हाट वी वांट टू डू इज कि मैंने प्रोडक्ट जो बनाया था अब वो मेरा परफेक्ट हो चुका है, दैट इज नाउ परफेक्ट. ओके, और what and the another thing that I have figured out is my GTM, जो मैंने अभी लास्ट में बोला था, GTM, my go to market strategy, कि भाई मैंने जो बनाया है उसको मैं मार्केट कैसे ले जाऊंगा, उसको मैं बेचूंगा कैसे. वो होता है जीटीएम. आपको जीटीएम डिफाइन बहुत परफेक्टली होना चाहिए. आपका एलटीवी, आपका कैग, ये सब जो मैथ्स है, ये जो धंधे वाली मैथ्स है, ये आपकी बिल्कुल परफेक्टली डिफाइंड होनी चाहिए प्री सीरीज के लिए. यहाँ पर जो इन्वेस्टर्स होते हैं, दे आर थोड़े से मैच्योर, दे आर नॉट थोड़े से, दे आर वेरी मैच्योर इन्वेस्टर्स हु हैव अ बिग फंड, ओके, टू मैनेज. ओके, बिफोर वी गो इनटू प्री सीरीज ए, जो प्री सीरीज ए में जो इन्वेस्टर्स होते हैं, द काइंड ऑफ इन्वेस्टर्स दोज हु इन्वेस्ट इन प्री सीरीज ए राउंड, वो इन्वेस्टर्स भी किसी और से पैसा उठा के लाते हैं टू इन्वेस्ट. ओके, वो भी एक प्रोफेशनल है, वो भी एक बिजनेस है. उसमें क्या होता है, उनको बोलते हैं हम इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स. ओके, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स जाते हैं बड़े बड़े फंडिंग लोगों के पास जाते हैं, एंड दे टेक द मनी फ्रॉम देम, और वो अपना एक किटी बनाते हैं. दे मेक अ पूल ऑफ से 500 करोड़ रुपीज, 1000 करोड़ रुपीज, 6000 करोड़ रुपीज, $1 billion, जिस तरह का भी इन्वेस्टर्स होता है. तो दे क्रिएट अ बिग पूल ऑफ the fund that they raise, and then they invest that money into you. Okay, so उनके लिए भी ये बिजनेस है, राइट? अंडरस्टैंड दिस, इन्वेस्टमेंट इज अ बिजनेस फॉर समवन. आपके लिए जैसे आपका स्टार्टअप है, आपके लिए जैसे आपका बिजनेस बिजनेस है, वैसे ही जो भी इंसान आप में पैसा लगा रहा है, जो भी इन्वेस्टर, जो भी पार्टी आप में पैसा लगा रहा है, वो भी बिजनेस कर रहा है. वो चैरिटी नहीं कर रहा है. इज नॉट गिविंग यू 5%, 5 लाख, 10 लाख, 5 करोड़, 10 करोड़ जस्ट फॉर चैरिटी, या अपने लिंक्डइन बायो में लिखने के लिए कि आई एम इन्वेस्टर. नो, ही हैज इन्वेस्टेड इन यू सो दैट ही कैन मल्टीप्लाई हिज मनी डाउन द लाइन. इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स आते हैं प्री सीरीज ए में. What are the key requirements for pre-series A round? You have to have a proven stream of revenue stream and customer retention. ये बहुत important है. Like if you don't have this,
cracking Series A is very difficult. Now you cannot raise pre-Series A without these two things: a proven revenue streams. कि how will you make money? How are you making money? आपका जो मनी मेकिंग साइकिल है बिजनेस का, कि आपका से 10,000 रुपीज का टेलीपोर्टिंग मशीन बन रहा है, और उस मशीन को लाइक कैन यू सेल इट फॉर 20,000 25,000 मार्केट में? सो और वो बिक रही है कि नहीं रही है, ये आपको हिस्ट्री दिखानी है. यू विल नीड टू शो दिस हिस्ट्री दैट यू आर एबल टू सेल योर प्रोडक्ट. सो वहां से एक कांस्टेंट रेवेन्यू स्ट्रीम आ रही है आफ्टर मार्केटिंग एक्सपेंसेस एंड एवरीथिंग. आपके पास कुछ बच रहा है या नहीं बच रहा है, यू आर स्टिल इन लॉस. आप 10,000 की मशीन को बेच के 25,000 पे बेच 10,000 की मशीन को 25,000 पे बेच के आप कोई प्रॉफिट नहीं बना रहे हो, चलेगा. चलेगा. दिस इज अगेन, लिसन टू इट, दैट यू नीड नॉट टू मेक प्रॉफिट because you are investing right now. You are investing in creating your marketing channels. आप अपना Facebook पे marketing channel बना रहे हो, Instagram पे channel बना रहे हो, you have a big marketing team, आप billboards लगा रहे हो, आप टीवी में ads खरीद रहे हो, आप अपनी brand बना रहे हो. So investor do not look for profit here. This is one very big delusion among investors कि मैं profit नहीं कमा रहा हूँ तो investor क्यों मेरे में invest करेगा? No, they are here to invest in a business who in long run can give you profits, not today. ओके उनको नहीं चाहिए कि आप 25,000 में बेच रहे हो 10,000 की चीज को, तो 15,000 बच रहा है तो उसमें 5,000 प्रॉफिट होना ही होना चाहिए. नो. एंड दैट इज व्हाई यू हियर अभी, इफ यू गो इन द मार्केट एंड यू सी फ्लिपकार्ट, स्विगी, जोमैटो, पेटीएम, ओला, every startup you hear in the market, and you still read their balance sheets, they are like, they are in 5,000 crore loss, they are in 500 crore loss, they are 50 crore loss, they are 5 crore loss every quarter. But again they are getting funding, and again they are getting this valuation raise because they are growing their market, right? वो परचूनी की दुकान नहीं है. they are not a परचूनी दुकान, they are not a general store in your local society that वो चलती रहेगी एक ही जगह पे, and they will just look for the profit from that particular store. They are like I would say chain of stores. They are like D-Mart की उन्होंने एक सेंटर को अगर प्रॉफिट यूनिट इकोनॉमिक्स प्रॉफिट पे बना लिया, they sorted their revenue stream maths and their customer retention maths, they will then try to replicate and scale throughout the country. That is what startup is all about. Startup is all about scale. You have to think really big. You have to really show the investors कि जो मेरी आज ये 5 रुपए की चीज है, ये मेरी आज जो 5 करोड़ की चीज है, ये एक दिन अगर सारा हमने सही से स्केल कर दिया, इफ वी स्केल दिस वेरी परफेक्टली, वी कैन क्रिएट 500 करोड़ चीज, वी कैन क्रिएट 5,000 करोड़ रुपए का चीज. दैट इज व्हाट यू हैव टू प्रूव. एंड दैट इफ यू आर एबल टू प्रूव दिस, दैट you can multiply your brand by 10x, 100x, 1000x, I am telling you, you will have the line of investors like ready to just give you your money. Because why not? They are here to multiply their money, and you have to show that maths. और उस maths के लिए बिल्कुल simple fundamental चीजें लगती हैं. You need to show them the revenue stream business, customer retention business, scalable go to market strategy. ये भी important होता है. वही customer retention में होता है कि भाई आप हाउ विल, आपने बोल तो दिया कि मैं टीवी पे एड चलाऊंगा, ओके, और या मैं न्यूज़पेपर में एक एड निकालूंगा, एंड उस न्यूज़पेपर के एड को देखकर 1,000 of people विल कम. 1 लाख लोग देखेंगे, उसमें से 10,000 लोग मन बनाएंगे और हमको कांटेक्ट करेंगे, और उस 10,000 में से 1,000 लोग हमसे खरीद ही लेंगे. ओके, सो नाउ यू नीड टू पुट दैट स्ट्रेटेजी एंड प्रूव दैट ऑन पेपर एज वेल, द मैथ्स ऑफ इट, कि मैं अगर 10 लाख रुपए में एक एड चलाता हूँ जिससे कि 1 लाख लोग मेरा एड देखते हैं, उसमें से 10,000 लोग मुझे कांटेक्ट करते हैं, और सिर्फ 1,000 लोग, जो कि 10% है, विच इज वेरी गुड बाय मार्जिन, खरीदते हैं मेरा प्रोडक्ट. तो उन 1,000 को बेचने के बाद हाउ मच प्रॉफिट और लॉस कैन आई जनरेट, हाउ मच रेवेन्यू कैन आई ब्रिंग इन? क्या मैं उतना रेवेन्यू ला पा रहा हूं कि भले ही मैं आज लॉस में हूं, लेकिन कल को जब मैं ये काम स्केल पे करूं तो ये मेरे लिए फीजिबल हो, ओके, स्केलेबल हो, अनटाइबल ना हो जाए. ठीक है, कि लाइक इट इज, आपने एक बार कर लिया, 2 बार कर लिया, बट आप उसको 10 बार नहीं कर सकते हो, आप उसको 1,000 बार नहीं कर सकते हो, बिकॉज स्केल सोच रहा है. इन्वेस्टर जो आ रहा है, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, सिर्फ और सिर्फ मल्टीप्लीकेशन सोचता है अपने दिमाग में, उसके अलावा कुछ भी नहीं सोचता है. दे ओनली थिंक अबाउट हाउ विल यू मल्टीप्लाई देयर मनी. सो यू नीड टू शो देम कि भाई, यू गिव मी 5 करोड़ रुपीज, आई विल पुट दिस 5 करोड़ रुपीज इन टू माई प्रूविंग स्केलेबल G2 GTM,
कि मैं ये जो 5 लाख करोड़ देगा तू, मैं इसको फेसबुक पे डालूंगा, मैं इसको इंस्टा पे डालूंगा, मैं इन्फ्लुएंसर्स लूंगा, मैं ब्रांडिंग करूंगा, मैं ये नई टीम हायर करूंगा, मैं यहाँ से सस्ते में प्रोडक्ट खरीदूंगा और यहाँ पर बेचूंगा. यू नीड टू प्रूव दैट मैथ्स. ओके. प्री सीरीज ए में अगेन द अनदर नेक्स्ट ऑफ सेट ऑफ इन्वेस्टर्स विच रियली हेल्प्स इज योर प्रीवियस इन्वेस्टर्स. ओके. सो हमारा सीड राउंड में जो मिस्टर पीयूष आए थे, मैं क्लास मॉनिटर के उससे परस्पेक्टिव से बता रहा हूँ अगेन, कि हमारे जो पीयूष आए थे, उन्होंने प्री सीरीज ए में हमको बहुत हेल्प करा टू ब्रिंग नेक्स्ट सेट ऑफ इन्वेस्टर्स. क्योंकि क्या होता है, एवरी सेट ऑफ पीपल हैज देयर ओन नेटवर्क, राइट? आपके नेटवर्क है, मेरा नेटवर्क है, वैसे ही इन्वेस्टर्स का भी एक नेटवर्क होता है. सो लाइक इफ अ हाई HNI, कोई रिच इंडियन पर्सन है सोसाइटी में, जिससे आपने अगर 50 लाख भी लिया है, and now he is a part of your startup, he owns 10% of your company. Now this company success is his success also, right? And if you are doing right things, अगर आप सही काम कर रहे हो और उसको दिख रहा है कि आपका इंटेंट भी सही है, he will introduce you to your next circle. So this is what happened with us in pre-series round A, wherein Mr. Piyush helped us connect lot of investors, lot of his colleagues, and even institutional investor. So institutional investor जिन्होंने हम में इन्वेस्ट किया था क्लास मॉनिटर में, that is Kalega. They are from Oman. They are very big family in family office, and like almost $1 billion kind of revenue they do in their core business. So their family office invested in us almost 3 crore rupees individually, that person, and that was just a call with the help of Mr. Piyush. Okay, so this is how the journey. Try to connect all these dots, right? Your investors, the kind of investor that you bring in also matters a lot, and this is where, in how much they are ready to help you, how much do they believe in you, how much connected they are. So that is how we like the pre-series A raise happens. Amount raise is typically 1 to 5 CR. It can go to any n number. Okay, valuation is typically hovering around 25 to 30 50 crore rupees में यहाँ पर valuation हो जाती है अच्छी खासी. If you can show that kind of scale, revenue and everything. ठीक है, आगे 5 crore. What next? So now what happens is series A round. Okay, series A round is, if you're reaching, you're good, you're doing very good. So what is the definition of series A round? Large scale funding to establish market leadership and achieve profitability. Now this is the first time wherein these things come, the makkah, the epitome of entire business, that is profitability. What are the key requirements? Strong KPIs. Okay, what is KPI? Key performance indicators. So your ARR, CAG, LTV जो बताया, ये एकदम स्ट्रांग होने चाहिए यहाँ पर और प्रूवन होने चाहिए. यहाँ पर कोई भी हवाबाजी नहीं होनी चाहिए. देयर शुड बी नो फेकनेस. मतलब यू हैव टू प्रूव इट बाय मैथ्स दैट योर एनुअल रिकरिंग रेवेन्यू, योर कैग, योर एलटीवी इज टोटली रिफाइंड. क्योंकि इटरेशंस लगते हैं, बहुत सारे इटरेशंस लगते हैं. आप एक स्ट्रैटेजी को फॉलो करोगे, वो चलेगी, उसमें कुछ चलेगा, उसमें कुछ नहीं चलेगा, उसमें लॉस होगा, उसमें प्रॉफिट होगा, उसमें स्केल होगी, उसमें स्केल नहीं होगी. सो यू नीड टू कीप इटरेटिंग. सीरीज ए तक आते आते यू नीड टू हैव एवरीथिंग परफेक्ट क्लियर. और अब तक जो मैं बात कर रहा था, लाइक एज आई सेड दैट अप टिल दिस लेवल profitability is nowhere in the scene, only scale and growth is. In series A, when you start talking to your investors, you have to talk about profitability. Again, I am specifying on this word. You have to talk about profitability. आपको books पे profitability दिखाना नहीं दिखाना is again optional. Okay, totally depends on how your business is operating, what business you are operating, what are your goals, what are your terms. But एक profitability की maths होनी चाहिए. So अभी अगर मैं क्लास मॉनिटर की बात करूं, मेरा खुद का स्टार्टअप, लाइक वी आर इन दिस राउंड, मतलब वी आर समवेयर इन दिस राउंड, और हम लोग जो भी नेक्स्ट राउंड रेस करेंगे वो हमारा सीरीज ए राउंड होगा. वेयर इन अब हमको जब भी हम बात करते हैं तो हमको वहां पर लाइक वी हैव टू शो देम द एंटायर स्केल. we can show them the scale that bhai we have this scale, industry recognition and a solid team. Industry recognition, what does that mean? If you remember, while I introduced myself, I said that ClassMonitor is now among the top 3 brands
early education brands in India. So this is what is our industry recognition. And how do you prove industry recognition? Numerous ways: press media, press coverage, your own following, your own customer set, your growth rates, your customer retention rate. This is what all proves your industry recognition. ये आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, अपने आप होता जाता है. This comes up and can be validated very easily. Okay, how to raise, build relationship with tier one VCs. Now comes the real boss. ये जो game, yeah, these are like the tigers, the sharks, the real sharks of investing. Okay, tier one VCs जैसे institutional investors होते हैं, वैसे ही उसके एक above layer में होते हैं tier one VCs. These are like venture capital firms. Okay, इनके पास जो firms होते हैं, again ये जो venture capital firms होते हैं, they also raise the big pool from the फ्रॉम अदर पीपल. वो जाते हैं बड़ी बड़ी कंपनियों के पास, बड़े बड़े बैंक के पास, बड़े बड़े म्यूचुअल फंड्स के पास, पेंशन फंड्स के पास, बड़ी बड़ी गवर्नमेंट्स के पास. सिंगापुर गवर्नमेंट बहुत बड़ा फंड करती है, कनाडा पेंशन फंड बहुत बड़ा फंड करता है, साउथ अरेबिया फंड बहुत बड़ा फंड करता है, नॉर्वे की गवर्नमेंट बहुत बड़ा फंड करती है. बिलियंस ऑफ डॉलर्स आई एम टॉकिंग अबाउट. सो दे फंड ऑल दीज वीसी फंड्स, वेंचर कैपिटल फंड्स. इनकी जो टिपिकल साइकिल होती है फंडिंग की इज ऑलमोस्ट 10 years. 10 years की रेंज में वो लोग इन्वेस्ट करते हैं एंड देन के होराइजन से इन्वेस्ट करते हैं. सो नाउ व्हेन यू आर इन द सीरीज ए राउंड, यू हैव टू स्टार्ट क्रिएटिंग रिलेशनशिप विद दीज काइंड ऑफ इन्वेस्टर्स. आपको उनको रीच आउट करना होता है, आपको उनको, यू हैव टू पिंग देम, पोक देम. उनकी टीम होती है. इनफैक्ट दे विल स्टार्ट पोकिंग यू. लाइक वी गेट रैंडम ईमेल्स फ्रॉम लॉट ऑफ funds. In fact, if you are doing good business, प्री सीरीज ए राउंड से आपको इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के और वीसी वन फर्म्स के जो ईमेल्स हैं अपने आप आना शुरू हो जाते हैं. दे हैव अ वेरी बिग टीम, क्योंकि उनके लिए भी बिजनेस है ना, राइट? Like investing is a full-time business for institutional investors and venture capital firms. So they have a big analyst team, those who will start approaching you. Okay, and they will keep an eye on you for 2, 3, 4, 5 years before investing. Again, like that is what is like, you need to have really good patience in this startup fundraising journey. Like hamara pre series A mein, there's one very big investor from Singapore who has invested in us, who came in us, and you would all be surprised that he invested in us after 4 years. He was like, we approached him 4 years back, and from last 4 years, his internal team, his analyst team, was just analyzing our numbers. They were analyzing our growth. They were analyzing our trajectory, that how we are capturing the market. They were analyzing our industry recognition, and they took 4 years to invest in us. Because why? Now you ask, why do they waste? Why do they wait? Because if they invested 4 years back, they would have got a lower valuation than higher valuation right now. But for these kind of investors, the kind of money they put in, the kind of risk they take in, they put in big money. Okay, they will single-handedly put 5 crore, 10 crore. Single person will put that kind of money on the lower side. So they do not, they just want to multiply their money by, say, 10x. They are very happy about it. They do not want to multiply 100x, 1000x. Good if it happens, very lucky for them, but they're content with 10x kind of returns. So they do not want to take that kind of risk, because the amount of money they putting in is single-handedly very big. So you need to build up relationships. And coming back over here, how to showcase competitive advantage and market growth. So what is your competitive advantage? Your market positioning, your market recognition is your competitive advantage. And market growth. Yes, now you're operating your business for 5-10 years. You have a big, you can show your market growth to your investors. Okay, पर्पस क्या होता है? टू एक्सपेंड ऑपरेशंस, हायर लीडरशिप, इन्वेस्ट इन मार्केटिंग. आपके पास प्रोडक्ट सब कुछ है, आपके पास पूरी प्लेबुक रेडी है. यू हैव योर एंटायर प्लेबुक ऑफ द बिजनेस रेडी नाउ. So now you want to raise this fund for operations, for expansions, for hiring the top leadership, the big hirings that happens over here. Amount of money that happens right now in Indore, India, 10 to 50 crores kind of money that happens. Valuations are over 100 crore, obviously. Okay, so if you crack this, the agenda of this webinar is achieved. Like, congrats, you have a 100 crore company now. Like, you are at least on papers, you created a 100 crore valuation company, right?
So, but again, that does not end the journey for startup. What is next? And next, then in mid there are series A, series B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, whatever alphabets you can put and go take that kind of round. But the last Makkah Madina for every startup is IPO, that is making your company public. Okay, listing your company on the stock market. Okay, it can happen anytime, but it totally depends on the kind of scale, the kind of scrutiny, the kind of returns those institutional investors are looking for. Okay, so uh, so why do people how do people decide? Multiple factors when to IPO, because once you IPO, all your numbers, all your business is public, because as the number, the public can come and buy your share on any of the stock, like stock brokers. So every detail of your company is public now, like how much you are making, how much you are spending, how much the CEO salary, how much you are spending on employees, what are your stocks. Every nitty gritty of your business is in public, so you are in tight scrutiny when you IPO. uh, but why does it happen then? Why does it happen, you ask me? Because it gives a good exit to institutional investors. So everyone is here for an investor. So for a multiple return. So if you start from angel investment, wherein the angel investor invested, then the seed round investor invested, pre-series A, series A. So ये जो लोग आए हैं, angel आया, seed आया, pre-series आया, series A आया, इनको एग्जिट कौन देगा? कि भाई मेरा तो 10x हो गया, लाइक आई मल्टीप्लाइड बाय मनी बाय 10x, नाउ आई वांट टू एंजॉय दैट मनी, आई वांट टू टेक दैट मनी आउट, राइट? सो जो नेक्स्ट आने वाला इन्वेस्टर होता है ना, वो उनको पार्शियल एग्जिट देता है. Remember this. So there are two type of investment that happens in a company. One is direct investment, and the other is secondary. One is primary, what you call as primary or direct investment, and the other is secondary investment. So primary investment is when the investor invest in the company, और वो पैसा कंपनी अकाउंट में आता है, और कंपनी अपने शेयर देती है इन्वेस्टर को, नए शेयर्स बना के इन्वेस्टर को देती है. सो दिस इज द थिंग, द एंटायर contract is happening directly with the company. So this is called primary investment. And the secondary investment is when someone from the company sells their share to the next investor. उसको बोलते हैं secondary. So secondary क्यों होती है? Secondary होती है, ये तुम्हारे जितने भी पुराने इन्वेस्टर्स आए थे अभी, एंजल, प्री सीरीज ए, सीड इन्वेस्टर, जो कि ऑलरेडी अपना पैसा मल्टीप्लाई कर चुके हैं, 5x 10x, 5 गुना 10 गुना कर चुके हैं, उनको एग्जिट देने के लिए सेकेंडरी होती है. सो सेकेंडरी से उनको एग्जिट मिलती है, दे मेक देयर मनी, वो अपना मनी फिर कई नए और स्टार्टअप्स में लगाते हैं, एंड दैट इज हाउ द एंटायर बिजनेस वर्क्स फॉर देम. सो ये होता है. तो जो सबसे आखिरी में आता है, जो द इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स एंड द टीयर वन इन्वेस्टर्स, जो 5-5, 10-10, 20-20, 100-100 करोड़ रुपए इन्वेस्टमेंट लगा के बैठे हैं आपके यहाँ पर, आपके बिजनेस में, उनको एग्जिट मिलती है आईपीओ से. सो फॉर देम, बिकॉज आईपीओ में क्या होता है, पब्लिक खरीदती है. इफ यू हैव अ गुड ब्रांड, रियली गुड ब्रांड, बिग ब्रांड, everyone from the public will try to buy your shares. Why not? Okay, public को access होता है, तो जो amount of money that can be raised is multiplied by numerous times. So it's a big exit strategy for the late stage investors. पर्पस सिंपल होता है कि क्यों आईपीओ कर रहे हो? स्केल ग्लोबली, डोमिनेट मार्केटिंग, गिव स्टेक होल्डर्स एग्जिट. सो दिस इज द मेन सीईओ, फाउंडर्स, सीनियर टीम यहाँ एग्जिट लेती है, यहाँ पर अपना पैसा बनाती है. की माइलस्टोन, सस्टेनेबल रेवेन्यू ग्रोथ एंड कॉर्पोरेट गवर्नेंस. आईपीओ में सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या होता है? प्रॉफिट, प्रॉफिट, प्रॉफिट. आईपीओ से पहले आप कोई भी कहानी करो, आप लाइक वट एवर स्टोरी टेलिंग यू आर टेलिंग टू द इन्वेस्टर्स, एवरीथिंग इज डाइजेस्टेड अनलेस यू कैन प्रूव द मैथ्स ऑन द पेपर. आप प्रॉफिट बनाओ या ना बनाओ, डजेंट मैटर मच. बट टू आईपीओ you have to start showing that profit into your bank. सबसे बड़ा जो अंतर होता है कि वो जो प्रॉफिट आपकी एक्सेल शीट में है, उसको आपको वहां से निकाल के आपको बैंक अकाउंट में लेके आना पड़ता है. दैट इज व्हेन यू आईपीओ. आईपीओ जर्नी सिंपल,
प्रिपेयर फाइनेंशियल ऑडिट्स एंड कंप्लाइंसेस बहुत होते हैं क्योंकि पब्लिक होती है इन्वॉल्व। तो इंडिया में सेबी है विच हैज अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग कंप्लाइंस। आप कोई फ्रॉड नहीं होना चाहिए, आपका जो नंबर्स आप बता रहे हो वो सारे प्रूवन होने चाहिए, वो सारे ऑडिटेड होने चाहिए, उसमें कोई भी फजिंग नहीं होनी चाहिए, everything should be crystal clear. You need to have a strong board and leadership team to adhere to those compliances. So this is was your journey from seed to IPO. uh, I'll just wrap this up quickly, this webinar, by giving you some closing tips. So ये पूरी जर्नी देखिए आपने, सीड से लेकर इन्वेस्टमेंट की। some quick tips, take away from my own journey: build relationship early. Like app, like you cannot go and ask someone to invest in you the day you met him, right? Like आप randomly किसी idea के साथ में आए and you met say Mr. Vikas someday Vedic Solutions में, and you said, Mr. Vikas, why don't you invest 5 lakh, 10 lakh, 20 lakh into me, in me? I have this very revolutionary idea. No, that doesn't happen that way. Okay, you have to have a relationship, लॉन्ग रिलेशनशिप, बिकॉज सामने वाले के लिए रिस्क है। द फ्रंट पर्सन इज नॉट गिविंग यू लोन, द फ्रंट पर्सन इज गिविंग यू money on basis of some paper shares which can be of worth millions and which can be worth nothing. So the risk is very high. So वहां काम आती है relationship. So you need to start, like, have relationships early on. Storytelling, most important, at least at the very start of your journey, that is angel round, seed and pre-series. Pre-series A tak you need to be very 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 strong in your storytelling. Like from my past experience of Oyo Rooms, Ritesh Agarwal, very good friend of mine, his storytelling capacity were just out of the world, very fabulous. See, I say this to every startup, budding startup, and I myself believe that entrepreneurship, founder क्या होता है? What? Who is founder? Founder is a person who can see a mirage. मिराज पता है अपने को? लाइक यू गो इनटू अ डेजर्ट, आप रेगिस्तान में जाओ एंड दूर देखते हो तो आपको कुछ दिखता है कि वहां पानी है, वहां पानी है, हो या ना हो, बट आपको दिखता है, ठीक है? सो अ फाउंडर इज अ पर्सन हु हैज अ होराइजन, हु सीज द मिराज, हु सीज समथिंग इन द एयर, कि मेरे को फार अवे आई कैन सी दिस हैपनिंग इफ एवरीथिंग अलाइंस well. If I can bring the team, if I can bring the funds, I can do the marketing, and if everything falls well in the place, I can create this teleporting machine that we are creating into the market, and we would be the number one players in the market, and we will just kill it for everyone. We will just make good money, we'll have huge success. So you have to believe in yourself, and when you believe in yourself, you have to make other believe as well. And how do you make that happen? By strong storytelling. Okay, बोलना आना चाहिए. You need to tell your story well. You need whatever you are thinking in your head, you need to reciprocate that and make others believe that as well. उनको भी you have to make them believe कि हाँ आज ये भले ही नहीं है. You don't have anything on papers right now. Everything is in your head, but with your capabilities, with your hard work and determination, you will make that happen. So this is one very very strong, I would say, skill that lot of Indian founders in particular miss and do not focus upon. You need to work on this. Again, once you raise some fund, focus on traction. Like angel विंजल हो गया, seed हो गया. Only thing that matters is your traction. You need to show traction. मतलब you should, once you raise that angel round, seed round, 20, 25, 30, 50 लाख आ गए आपके बैंक अकाउंट में, the founders only and only focus should be कि कैसे भी करके, like whatever he does, obviously in the good faith, he just focuses on the traction, nothing else. उसके बाद क्योंकि आने वाले राउंड है वो ट्रैक्शन पे ही होने हैं, वो नंबर पे ही होने हैं. जैसे आपने अभी पढ़ा, आई टोल्ड यू दैट सीरीज, प्री सीरीज ए के बाद में या प्री सीरीज ए में सब चीज नंबर पे बात होती है, वहां पर हवा थोड़ा सा खत्म होता जाता है. सो यू हैव टू बी वेरी वेरी practical. Be financially savvy. Trust me, again, one of the very big learning that no one teaches us, and that what ClassMonitor has taught us.
to run a successful business, to run a successful धंधा, you need to be financially savvy. आप कितने भी टेक्निकल हो, आप कितने भी क्रिएटिव हो, आप कितने भी मार्केटिंग वाले बंदे हो, you need to have your numbers, you need to have your hand very strong on the numbers. What is coming in your bank and what is going out of your bank, वही सत्य है, उसके अलावा सब कुछ फेक है, उसके बाद सब कुछ मिथ्या है. Like in the end, when you will go to anyone to raise funds, they will only believe your cash flow and nothing else. वो आपके projections हो गए, सब कुछ हो गए, they'll believe, they'll obviously, I'm talking about the later series rounds, they will only believe in your cash flow, nothing else. आपका EBITDA हुआ, CAC, FAG, LTV, सब कुछ है, that is a foundation. But जो फाइनल डिटर्मिनेशन होता है यस और नो का, कि पैसा आएगा कि नहीं आएगा, that only happens on your cash flow. And to control that, you need to learn basic accountings. As a founder, you need to learn it. You cannot ignore it. If you are ignoring it, you will die down one or किसी ना किसी दिन you will be in a deep trouble. But you need to learn at least the basic accounting, basic ledger, क्या आ रहा है, क्या जा रहा है, कहाँ जा रहा है, कहाँ आ रहा है, कब आएगा, कैसे आएगा, everything you need to एक एक्सेल शीट को मेंटेन करनी पड़ेगी. Here again, Piyush, the seed round investor, helped us really very well. We really thank him for that, as in because he was a certified CA. He made us write down every expense that we made in a particular month. And early on in that time, we were very angry about that. He's asking us to do a slavery. It is my company. Why should I'm spending it judicially? I'm spending on the right things. But why is he asking us to note down everything? But now, after 5, 6 years, 7 years, when we have grown to 100x scale of revenues, we now know the importance of this. So this is very important. Adapt and pivot. As I said, startup is a very long journey. You will have to adapt and pivot, adapt and pivot. And adapt and pivot does not only mean in your idea, in your business, in your pitching as well. If you're raising your funding round, it's a marathon race. You will need to you will need to figure out 1,000 people whom you can talk to, meet, probably have a successful meeting with 100 of them. 10 would probably be showing some interest कि हाँ चलो, I can write a check for you, and trust me, out of those 10 only 2 or 3 will really put in that money. So this is the success rate कि 100 कि 1000 में से 2-3 ही देंगे. ये हर राउंड का कहानी है, not just angel. ये हर राउंड का कहानी है कि आपको कम से कम 1000 को जाके पकड़ना है, और उसमें से 1-2 अगर आपको डाल देंगे, आपकी नैया पार हो जाएगी. You will sail through. So in that journey, you have to literally adapt कि लोग क्या सुनना चाहते हैं, what is clicking it, what is not clicking, and then you have to pivot, change करना पड़ेगा अपना strategy. You have to be that smart. So, and then the third, and again some important one, I'll try to put my head ahead. Okay, fine. Have patience. Like this is a typical funding cycle is almost 6 to 2.5 years long. Yes, 2 years long. It can be as big as 2 years long. Okay, and typically 6 महीने तो लगते हैं. Angel होता है, yes, angel can be quick because it is done on your relationship, your own network, your own trust. But as you grow down the line, the journey of an IPO can literally take over 2 years. कि आज कंपनी सोचती है कि हाँ हमको IPO करना है, and they start preparing for it. 2-3-4 साल लग जाते हैं सिर्फ IPO की प्रिपरेशन में, इतना सारा काम होता है. So same ways, you have to have really very big patience within your team, within your plans, and the most important things, money is funding only comes when the money is in your bank. आपने term sheet sign कर दी, due diligence हो गया, सब कुछ हो गया, everything happens, but funding is not done unless the money is in your bank. And it happens, it has happened with us as well, literally, like numerous times wherein the investor has agreed, they have signed the paper, they have done everything. In fact, in one instance, the investor has transferred one trench of the fund. So like we were raising 1 crore from that particular investor, and he said that I'll give you in 3 trenches, 3 parts में देगा. He transferred the first 30 lakhs, and in the second 30 lakhs he said that, dude, I don't have any more money, so I cannot give you. And you can't sue, you can't go and file a complaint about it.
So that is so you need to be very practical about what you have in your bank is only the funding that has come. So manage your expenses, manage your plans accordingly. So closing things, funding is a journey, not a sprint. If you're thinking of कि बस आपने थोड़ी सी 100 meters की race लगाई and you will be on the path, no, it does not happen that way. It is a long journey. So prepare yourself, and that is why I started this webinar with the very first few कि you should be very clear in your head कि तुम startup कर क्यों रहे हो? Why are you starting up? Are you starting up because you are passionate, because you want to have lifestyle of a founder, or because you are want to be rich? Okay, so yes, you can be like startups can be make you real rich, but it takes time. I came to Indore with nothing, literally nothing, and have a considerable ground now. So all because of startup. So it does happen. Businesses is what creates the society, creates the country, creates the GDP. Businesses are the fundamental pillar of the modern world century. That is what we call capitalism. So they will create you real wealth. They will make you wealthy, not just rich, but wealthy. But you need to have that kind of patience for the long journey. And great companies are built on great partnerships. All your investors are your partners. Bring the people who you see as your partners, right? They are the people who have already made money, so they have some intelligence, some much more intelligence than you. So you have to have that kind of alignment with them, that they are your not that they are your partners. As I said, that idea to IPO is a big journey, ideally a decade long. 10 साल तो minimum लगते हैं. If you crack it in 10 years, you are very very lucky. Consider your starts to be very high. So typically, if you start angel round today, let's say next year, 2025, this is the typical cycle that looks like. And 10 साल के आसपास ही आप सोच सकते हो IPO करने का. So you need to be mentally prepared. Otherwise you will burn out in the mid, थक जाओगे and सब बीच में छोड़ दोगे. So it's a big long journey. Closing remarks for the day, for the webinar, quite a long thing. We talked about investors are here to make money, show them how. So these are my closing mantra. When you are going to raise money, trust me, these are my crux of my own experience of past 10 years, that whether it be angel round or the IPO round, institutional investors or anyone, investors are in the business. They are not for charity. वो NGO नहीं खुला है उन्होंने. They are not NGO people. They are here to multiply their money. So when you go and talk to anyone, your angels, your seed, whatever, you need to show them the maths. कि भाई आज तू मेरे में पैसा डाल, you put me 1 crore at 10 crore valuation, and within next 5 years I will multiply that by minimum 10x. I will make this a 100 crore company, and your 1 crore would be 10 crore. He will be very happy if you can prove that. They will invest in you. Second most important thing, focus on business. Investors will follow. As I said, each investment cycle takes a lot of time. So आपको बिजनेस भी चलाना है, एंड दैट बिजनेस भी नहीं, बिजनेस ही चलाना है, राइट? योर मेन पर्पस इज टू रन द बिजनेस. Investors are the secondary part, okay? And if someone does not, other will, if you keep continue running the business and if you focus on the business. अगर आप बिजनेस के प्रॉब्लम्स कैसे भी सॉल्व कर लोगे, any which ways. From my own journey in ClassMonitor, trust me, the investors that have denied us money, okay, say the investors who have denied us money in seed round, pre-series A round, trust me, I'm not bragging, they have literally requested us to allow the investment in the next round. And at least in Indore itself, there would be more than 5 such investors, those who would have denied us the money in a particular round, maybe because of the valuation, maybe because of their terms and conditions, or maybe because of their indecisiveness. They could not make a decision. But down the line, after some like seeing our growth, our business, they literally requested us that we should somehow take their money in the next round at the raised valuation.
So focus on business. Never forget that you are here to do business and not just to have that fancy title. And then the last and the most important, just don't die. Somehow keep selling. So if you are into the business, just be alive. Kaise bhi karke, I don't know. Like you have to figure out your own hustle. But if you have started a business, cut your expenses, hustle, do side business somehow or the other way. Just don't let your business die. Don't let your spark die. Because अगर business ही नहीं है तो सब खत्म. It everything ends. But if you keep it running, even slow, gradually, something will follow. आप ट्रैक्शन बनाओगे, मोमेंटम आएगा, लोग आपकी प्रोग्रेस देखेंगे. उस वैल्यूएशन पे नहीं तो थोड़ी एडजस्टेड वैल्यूएशन पे दे विल पुट सम मनी एंड देन यू विल सेल थ्रू. उस टफ टाइम से आप निकल जाओगे. So with these three, I just conclude my long pitch. I'm open for some questions if there is time. Rest over to you, Vikas. This was a brilliant, brilliant, Yeah. brilliant Yeah. session, Vikas. Yeah. I actually had all these way of doing things when I was like in my early 30s. And Yeah. somehow I realized that there are certain struggles that happen in boardroom Mhm. when with investors and all. I started my first venture, first big venture long back when I was 24, 27, I believe. That was a B school. Uh, Mhm. that was called Kothari B School. Me and Okay. Kothari ji started together, and it was, I believe, 2008. But there are certain struggles and there are certain things that happen in the boardroom. So how did you manage this boardroom conflict, if ever happened in Class Mhm. Monitor? It might have happened many times because Yeah. So like, yeah, mhm. So yeah, in particular, like like in boardrooms, there are two type of people. Okay, one is your team members, the board of directors, or the investors. You once you scale, once you raise good amount, investors के भी director आते हैं. Investors representatives or investor themselves take a board seat. boards. Okay, okay. Uh, at our stage, I would say in our journey, luckily we didn't had very any big conflict so far. Luckily, touch wood, we have been very crystal clear on our business terms and lines. Never fudged anything. If you don't have anything to hide, there don't like you don't have to anything to shy off. So major struggles are because of that reason only. If your intent are not right, the next struggle that comes through is for some terms. Okay, so whenever some new investor comes, they try to come up with their own set of terms and conditions. Okay, and sometimes those terms and conditions are too tight to think of to start with. when यू आर स्टार्टिंग अप ना आपको लगता है कि उसने एंटी डाइल्यूजन क्लॉज भी मांग लिया, उसने प्रेफरेंशियल शेयर भी मांग लिया, उसने ये भी मांग लिया, वो भी मांग लिया, एंड आपके शेयर भी डाइल्यूट नहीं होंगे, यू कांट सेल योर शेयर्स, उसमें क्लॉजेस लग जाते हैं बहुत सारे वंस यू रेज द फंड. सो I would say you have to maintain a balance between both. Again, you as this first line on the PPT still says that investors are here to make money. So आपको उनके perspective से भी सोचना पड़ेगा. You will have to think from their perspective that वो जो भी terms and conditions मांग रहे हैं, does that align for their surety and safety of the money. कहीं ऐसा तो नहीं है कि लाइक आप लाइक इफ दे गेव यू 5 करोड़ रुपीज और कल से आपने जाके फाउंडर्स ने एक एक मॉग खरीद ली, एक एक बीएमडब्ल्यू खरीद ली, सैलरीज अपनी 4-4 5-5 लाख कर ली, एंड दे आर इन्वेस्टिंग मनी इन द फैंसी ऑफिसेज एंड व्हाट नॉट, और बिजनेस चल रहा है अपना. सो यू हैव टू थिंक फ्रॉम दैट परस्पेक्टिव एज वेल कि वो जो भी कॉन्फ्लिक्ट अराइज हो रहा है उसका रूट कॉज क्या है. If the root cause is in the favorability of business, I would say sometimes you need to bow down. आपको झुकना पड़ता है. You agree to it. Okay. And as you progress ahead in the journey, you will realize with experience, this is my personal experiences, that वो सब जो terms or conditions थे, they were favorable, they were good enough, they were right at their own stage. कई बार ऐसा भी होता है some unfavorable come, और totally depends on the stage. I would say कितना compromise करना है, कितना नहीं करना है, totally depends on the stage. जैसे अभी लास्ट हम लोग अभी एक ब्रिज राउंड कर रहे थे, प्री सीरीज ए के बाद एक ब्रिज राउंड किया हमने. सो उसमें एक अब इस लाइक
ClassMonitor is over 20 crores of revenue per year. हम लोग 20 करोड़ का धंधा करते हैं अभी, इन बैंक आता है. So someone came and asked us, one very big investor, and asked us कि हमको ये preferential delusion वाला right चाहिए. जब भी dilution होगा business का तो हमको preferential right चाहिए, and we denied it because now we are at a stage, हम 150 करोड़ की कंपनी है वैल्यूएशन वाइज. सो वी नो दैट अब इस तरह के क्लॉजेस हम नहीं दे सकते बिकॉज वी हैव अ बिग बोर्ड टू हैंडल. ओके, Right. अगर हमने इनको दिया, everyone else will come up and everyone will just ask for it. So that is what I mean कि you have to have always a balance कि ultimately business के favor में क्या है, business के लिए अभी क्या सही है. So I Good. believe this is the answer. I have a second question that when did you start taking salaries, sensible salary, like basic? Okay, cool. Because the first struggle that startup founders face when they are in a job, they are working, they are earning salaries and everything is Hmm. happening. Then if there is an investor idea, they prepare good paper and everything happens. If Hmm. they want to switch from job to a business, and Hmm. investor is investing say 10 lakh rupees or 5 lakh rupees in the initial stages. Hmm. So, and the journey is going to take say next 6 months or 1 year's time. So they Hmm. have a little tough time, but for 6 months they can manage with their savings and all, running the Hmm. household and all. And Hmm. next, when in your case, in after dairy it came Piyush round. See, no, So exactly, exactly. yeah, C round. So how did you manage it that way that you are taking out your own monthly expenses also, and how did Hmm. like how much you took, and how did Okay, investor agree on that? okay, cool. So I'll give you a brief of that as well. उसमें उसमें again the clarity. I'll reiterate the term. जिस point से मैंने ये पूरा webinar start किया कि you need to have this clarity in your head that why are you starting up again. To start up, to do any business, even a general store, chemist store, or an industry, making rockets, whatever, you have to be very, very passionate about whatever you are doing. Then only you can sail through this hard journey. Why this passion and this real sense is needed? Because if you are starting up, it will always be a struggle for making money yourself. दिस इज वन हार्श रियलिटी ऑफ डूइंग स्टार्टअप. लोग फैंसी टाइटल्स कुछ भी लिख लें अपने लिंक्डइन पर. I am an entrepreneur. I'm doing this startup for the coolness thing. But in reality, the toughest part of the doing a startup is making money for yourself, making the basic needed salary for yourself. Because आपको सबसे पहले, जैसे मैंने स्टार्ट में बोला कि सबसे पहले यू हैव टू पे योर सैलरी. उन 100 जो भी लोग आपने हायर किए, 10, 50, 100, उन सबकी जो भी सैलरी है, यू हैव टू गिव देम फुल सैलरी. यू कैन नॉट से दैट कि आज 1 लाख ले ले, कल 20,000 कम ले ले बिकॉज इस महीने बिजनेस थोड़ा डाउन था. नो, यू कैन नॉट सो दैट. वो चला जाएगा छोड़ के. ही विल हैव अदर ऑप्शंस. सो on the salary part, you should be mentally prepared to live on bare minimum. Again, telling from our own experience of ClassMonitor, at least for first 4 years, me and my partner, we did not take we did not even take half of our salary which we were getting before we started ClassMonitor. So I was not taking half of the salary. And how did I came up to a number? I just managed one of my thing that मुझे bare minimum मेरे rent, मेरा घर, my living, my eating expenses जो bare minimum है, how can I reduce that? And I came to that number कि ये तो चाहिए ही चाहिए मेरे को. And then I came up to an agreement with my investor that this is the amount that we need, and we both agreed. And so up now, to live at that low number, you have to have that mental अंडरस्टैंडिंग विद योर सेल्फ एंड नो वन एल्स. आपको अपने खुद के साथ में वो मेंटल अंडरस्टैंडिंग बना के रखनी पड़ेगी कि ये जो तुम बना रहे हो, ये क्लास मॉनिटर जो तुम बना रहे हो, या ये जो भी तुम आइडिया बना रहे हो, दिस इज यू आर मेकिंग योर ओन डेस्टिनी, आई वुड से. ये अगर क्लिक कर गया, ये अगर चल गया, ये अगर बन गया, तो आप सिर्फ रिच नहीं, आप वेल्दी हो गए. यू विल क्रिएट जनरेशनल वेल्थ. आप जो जॉब में पिछले 10 साल में बचा पाओगे आफ्टर ऑल योर इंडस्ट्री सैलरी एंड लाइफ एंड एवरीथिंग, if this clicks out, you will maybe make 10x, 50x, 100x amount of money that you can make in a regular life.
So this is what keeps you driven enough, passionate enough. So to answer your question straightforward, for at least 4 years, we took half of the salaries of what we could have easily got in the market. It was only after pre-series A round, जब कंपनी को 5-10 करोड़ रुपए मिल गए थे, दैट इज व्हेन वी टुक बेसिक लेवल ऑफ सैलरीज, जो हमें डिसेंट इनफ ऑफ सैलरीज, नॉट इवन मार्केट इनफ ऑफ सैलरीज, आई वुड से। लाइक अगर आज कहीं मैं जाके अगर अप्लाई करूं सही जगह पे, अपने लेवल पे, आई वुड इजिली गेट 3 times 4 times ऑफ द सैलरी दैट आई एम टेकिंग आउट राइट नाउ। सो ये ऐसे भी कंपनसेट हो जाता है। आदमी को ऐसे भी सोचना चाहिए कि ऐसे नहीं सोचना कि मैंने अपनी सैलरी आधी कर ली। ही शुड थिंक इन अ पर्सपेक्टिव कि वो हर महीने ये सैलरी जो बेसिक है, इसके साथ में ईसॉप जो उसके शेयर हैं कंपनी में, उसकी वेल्थ भी तो बना रहा है वो। सो अगर आप मोटा मोटी देखो, अगर आज मैं क्लास मॉनिटर को अगर मैं जर्नी में अगर पीछे मुड़ के देखूं 8 साल में, आई माइट हैव गॉट say 25% of the salary that could I could have driven in the market, but the wealth in the terms of shares, the money that I have made in the terms of share, because I hold a considerable amount of shares in the company, that if I account for that, I would have easily made 10x 20x of what मुझे बाहर जो सैलरी मिलती, मेरी रियल सैलरी मिलती उससे। Okay, next question I have, Saurabh ji, I'll put you again. I'll take up your question, but I want to learn one more thing, that how did you manage to run out of fund, because 5 lakh ruपया which you started with was हम्म। hardly enough for 6 months time. Then how हम्म। did you manage to run out of funds, paying salaries to the developers and all that? How did you do that? एग्जैक्टली सो हाँ, सो उस पे भी आते हैं। सो सबसे पहला राउंड जो हमने लिया था वो था 5 लाख का, जो कि मेरा एंजल राउंड था। एंजल राउंड का एजेंडा होता है सिंपल सिंपल, अपना एमवीपी रेडी करना, कि भाई अब तुम मार्केट में जाओ, यू शुड प्रिपेयर योर एमवीपी, और उस एमवीपी में यू कैन क्रिएट अ प्रोडक्ट एंड स्टार्ट सेलिंग इन मार्केट। कुछ अर्ली ट्रैक्शन लेके आओ, जो तुम्हारे दिमाग में है उसको टेबल पे रखो। दिस इज द ओनली एजेंडा। सो आई वॉज क्लियर ऑन 2-3 डिफरेंट थिंग्स। मैंने अपने उस सीड राउंड में, उस एंजल राउंड में, आई लाइक यू नीड टू प्रिपेयर योर प्रायोरिटीज। आपने अपनी प्रायोरिटीज बना ली। सो मेरी सबसे पहली प्रायोरिटी थी कि मुझे तो आई हैव टू क्रिएट अ वर्ल्ड क्लास ब्रांड। सो एज यू मेंशन इन द इंट्रोडक्शन, of that 5 lakh rupees, I purchased the domain. I was very clear on the brand or marketing. This is one thing I have learned from Apple, कि if you are in the market, you have to create a brand. Brand is what you create the wealth. आप लोग आइडियाज कॉपी कर सकते हैं, बट ब्रांड नहीं कॉपी होती है। ब्रांड में टाइम लगता है, कॉपी करने में, ब्रांड बनाने में टाइम लगता है। सो फॉर दैट आई वॉज क्लियर अबाउट कि अगर टेक में ब्रांड बना रहे हैं तो यू नीड टू कम विद अ गुड नेम, कैची नेम, जो कि मीनिंगफुल हो सके। I literally spent 1,25,000 for the domain ClassMonitor.com. I purchased this domain from a US company, and my all my friends, even myself, was कि मैंने अपनी पूरी फंड रेस का ऑलमोस्ट 20-25% मैंने सिर्फ एक डोमेन पे लगा दिया। बट आई वॉज क्लियर इन माई हेड वन। सो वहां पर गए 1.25 लाख। उसके बाद वॉज एमवीपी बनाना था। आई के में अब यहाँ पर आते हैं, यू हैव टू बी हसलर, आपको हसल करना पड़ेगा, यू हैव टू बी स्मार्ट। सो एमवीपी बनाना था। आई वेंट टू द मार्केट टू फाइंड डेवलपर, कि मुझे ये प्रोटोटाइप बनाना है अपनी ऐप का, व्हाट डू आई डू। आई फाउंड आउट, माई मेरे सर्कल में कुछ एक अच्छा सीनियर बंदा था, मैंने उसको बोला कि दिस इज व्हाट इट इज, मुझे एक एस्टिमेट बना के दो कि हाउ मच वुड इट कॉस्ट टू मेक दिस एंटायर एमवीपी। अब यहाँ पर स्मार्टनेस आती है कि उसने मुझे कोड दिया, मान लो 1 लाख 2 लाख का मुझे कोड दिया कि ये पूरा प्रोडक्ट इसमें बन जाएगा, 1 लाख 2 लाख रुपए में, आपका 2 लाख रुपए में ऐप बन जाएगा। बचेंगे कितने आपके पास? 2-3 लाख रुपए। मार्केटिंग कितने में करोगे? आई गेव हिम द प्रपोजिशन कि तू मेरे से टेक सम शेयर्स ऑफ द कंपनी एंड टेक सम कैश। इंस्टेड ऑफ टेकिंग गिविंग यू 2 लाख रुपीज, आई विल गिव यू सम कैश, सम मनी एंड सम शेयर्स ऑफ द कंपनी, सो दैट मेरे पास वो पूरा पूरा 5 लाख जो मैंने रेस किया वो खत्म भी ना हो जाए, और वो बंदा भी मेरे से टिका रहे, जुड़ा रहे, कि भाई मैंने ये एमवीपी बना लिया है, इसमें कोई प्रॉब्लम आएगी, इसमें कोई ट्विकिंग होगी छोटी मोटी, तो वो मेरे को करता रहे, वो मेरे से जुड़ा रहे। मतलब इट शुड बी थोड़ा सा जर्नी बने। ऐसा ना हो कि मैं डेमो दे रहा हूँ कहीं पर और वो प्रोडक्ट फट गया मेरा, एंड देयर इज नो वन, फिर मुझे पैसा लगाना पड़ रहा है। सो आई मेड हिम अ स्मॉल पार्ट ऑफ द कंपनी, आई गेव हिम फ्यू शेयर्स ऑफ द कंपनी एंड सम कैश, एंड दैट इज हाउ आई क्रिएटेड माई एमवीपी। एंड देन बचे 2-3 लाख रुपए से मैंने कम से कम, हम मैं और मेरे पार्टनर ने, हम लोगों ने
कम से कम 100 150 स्कूल जोड़ लिए, खुद जाते थे। वी यूज टू डू, यू हैव टू डू डर्टी वर्क, यू हैव टू डू डर्टी वर्क। आप फाउंडर बन गए हो अपने दिमाग में, बट स्टिल यू हैव टू डू एवरीथिंग। आपको सुबह उठना पड़ेगा, यू हैव टू डू एवरीथिंग। आपको स्टैंडी लगानी पड़ेगी, आपको प्रोजेक्टर लगाना पड़ेगा। वी यूज टू सेल द क्लास मॉनिटर प्रोडक्ट टू एवरी स्कूल इन इंदौर। एंड आई विविडली रिमेंबर वी यूज टू राइज अप अर्ली 6 in the AM, जाते थे हर स्कूल में, टीचर से मिलते थे, प्रिंसिपल से मिल रहे हैं, बाहर बैठ रहे हैं, स्टैंडी लगा रहे हैं, पावर केबल ढूंढ रहे हैं। वी डिड एवरी वर्क एंड दैट इज हाउ वी स्टार्टेड सेलिंग। जैसे ही मेरे 100 150 कस्टमर्स हुए, मैं सीड राउंड के लिए रेडी हो गया, फिर मैंने वहां से नेक्स्ट राउंड उठा लिया, एंड दिस इज हाउ द जर्नी गोज ऑन। And how much was the fund, initial bootstrap fund that you invest? Bootstrap fund, I would say, luckily, though I had that kind of savings, but I did not need to spend anything. 5 lakh से this is class motor start with it. Very, मतलब, to be honest, on the paper, literally class motor started with the angel round of 5 lakh rupees, and today we are raised over 150 crore rupees. And how much you have diluted so far, like in the journey? Diluted dilution again, अब इसमें भी बहुत सारे पैरामीटर्स होते हैं, बहुत सारे पैरामीटर्स, नो मैथ्स टू बी वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड और पुल अप बेंचमार्क टू, ओके, बट इसमें सबसे बड़ा फैक्टर होता है द लोकेशन यू आर इन। इंदौर कई मामलों में बहुत अच्छा है, लाइक टू स्टार्टअप, एज इन इट्स अ वेरी इकोनॉमिकल सिटी, इट्स अ वेरी रीजनेबल सिटी टू डू एक्सपेरिमेंट, टू डू अ स्टार्टअप, बट इट इज अ रॉन्ग सिटी टू रेज फंड्स, इट इज अ रॉन्ग सिटी टू हैव अ मैच्योर मार्केट। ओके, ऑपरेट करने के लिए बहुत अच्छी सिटी है, बट सेल करने के लिए, रेज करने के लिए बैंगलोर, दिल्ली, मुंबई, दे आर द परफेक्ट सिटीज जो हब्स होते हैं। वाई? बिकॉज देयर यू गेट गुड वैल्यूएशंस, True. वहां डाइल्यूशन कम होता है, वहां जो राउंड्स होते हैं वो थोड़े क्विक होते हैं, ऐसा। तो आप ये मान सकते हो कि सिकोस सीरीज, मतलब सीरीज ए तक, मैं अगर रफली एक बॉलमार्क फिगर दूं, कि अगर सीरीज ए तक आते आते या सीरीज ए तक अगर फाउंडिंग टीम अपना 50% भी रख पा रही है कंपनी का, they are good, they are doing good, they are मतलब doing very good. Okay, just to give you a perspective, just to give you a perspective, इसमें एक और perspective मैं budding entrepreneurs को देना चाहूंगा, जो मेरे दिमाग में भी रहता था कि why should I give away my company, why should I give, you should value it obviously, क्योंकि जब वो चीज बहुत बड़ी बनेगी तब आप रियलाइज करोगे एक एक शेयर की कीमत क्या होती है। लाइक क्लास मॉनिटर का एक शेयर शायद 10 रुपए से स्टार्ट हुआ था। आई एम जस्ट गिविंग यू अ रियल एग्जांपल। जब व्हेन वी रजिस्टर्ड द कंपनी क्लास मॉनिटर, वन शेयर ऑन द एमसीए वेबसाइट वाज 10,000 रुपीज। अभी हमारा जो करंट शेयर है कुछ रफली 75,000 रुपीज के आसपास है एक शेयर में। सो वी हैव मल्टीप्लाइड दिस मेनी टाइम्स। सो सो यू हैव टू वैल्यू दैट शेयर, एक जो आप शेयर है, एंड दैट इज हाउ यू क्रिएट वेल्थ। बट हाँ, एक और चीज होता है, एक और यहाँ पर पर्सपेक्टिव होता है, छोटी सी चीज का बड़ा हिस्सा या बड़ी चीज का छोटा हिस्सा, वेरी क्लीशे टर्म, बट रियली पीपल शुड सिट एंड थिंक कि व्हाट इज देयर गोल ऑब्जेक्टिव, व्हाट इज देयर विजन। इफ अगर बड़ी चीज बनाने से आपको बहुत बड़ा फायदा है और उसका अगर आपको कंपैरेटिवली छोटा हिस्सा भी है, स्टिल यू विल मेक मच मोर, बिकॉज यू विल हैव लॉट ऑफ फेम, यू हैव लॉट ऑफ क्रेडिबिलिटी टू एडेड टू योर नेम, बिकॉज आपकी ब्रांड इंडिया के टॉप ब्रांड्स में है, हंड्रेड्स ऑफ करोड़ का ब्रांड है, रेवेन्यू है, और वहीं पर एक बट आप किसी को नहीं दे रहे हो, और पूरा पूरा मुनाफा, पूरी कंपनी ओनरशिप आपके पास है, बट अगेन इट्स अ स्मॉल स्मॉल सेटअप। So dilution should not be the stopping point. Yes, but every entrepreneur should uh, literate themselves. वो थोड़ा सा रिसर्च करें मार्केट में कि क्या उस लोकेशन का बेंचमार्क है। ओवर डाइल्यूट भी मत करें, क्योंकि वो बाद में जाके अखरेगा, लाइक बाद में इट विल क्रिएट प्रॉब्लम्स, दे विल रियलाइज देयर मिस्टेक्स। सो दे शुड नॉट ओवर डाइल्यूट, बट दे शुड नॉट ऑल्सो थिंक कि मुझे ओनरशिप मेरे हाथ से जा रही है, क्योंकि वो पैसा नहीं आएगा, अगर वो 5 करोड़, 10 करोड़, 20 करोड़ नहीं आएगा, तो आप नेक्स्ट लेग ऑफ ग्रोथ में जा ही नहीं पाओगे, तो आपकी कंपनी स्टेगनेंट हो जाएगी। सो ये सब बैलेंसेस बनाने पड़ते हैं वैल्यूएशन में। Very important. Now, there is one thing that I want to know, that what has been the toughest two or three things in the journey of the class monitor, and did it happen to you that now the company is not going to survive? ऐसा कभी ओके, फाइन। मौका आया? ओके, सो लाइक I'll give you few examples from my our journey. सी, सबसे टफेस्ट जो होता है, सबसे टफेस्ट जो होता है, वो होता है आइडिया क्रैक करना। उसको बोलते हैं पीएमएफ, प्रोडक्ट मार्केट फिट। True. क्या करना है इज द
टफेस्ट आंसर, लाइक टू बी ऑनेस्ट। बाकी सब बहुत आसान, मतलब कंपैरेटिवली आसान है। इज इजियर टू क्रैक देन टू फाइंड द PMF, एक ऐसा प्रोडक्ट जो कि people are ready to buy, which is scalable, which is profitable down the line. Finding that product was the toughest. We did multiple iterations, हमने भी pivot किया क्लास मॉनिटर में। क्लास मॉनिटर के पहले साल में हम एक मैसेंजर प्लेटफॉर्म बना रहे थे, व्हाट्सएप फॉर प्ले स्कूल। ये हमारा जर्नी था जब हम सृजन में थे। वी आर क्रिएटिंग अ व्हाट्सएप प्लेटफॉर्म फॉर पर्टिकुलरली फॉर प्ले स्कूल्स। और उसके बाद हमने उसको नेक्स्ट ईयर में पिवट किया अर्ली एजुकेशन ब्रांड के फॉर्म में, जहां पर कि हम लर्निंग मटेरियल प्रोवाइड करते हैं डिजिटल ऐप और फिजिकल किट्स के थ्रू पेरेंट्स को, टू टीच देम एट होम। सो पूरा टोटल हमने एक कंप्लीट स्विच मारा। बट हमारा जो कॉमन रिलेटिंग क्या था कि हम एडटेक में ही थे, और पहले जब हम मैसेंजर प्लेटफॉर्म बनाया था तब भी हम प्ले स्कूल को टारगेट करते थे, और आज भी हम प्ले स्कूल को। सो दैट इज आई वुड से द टफेस्ट पार्ट, जो सबको सोचना चाहिए। अगेन, एक जो लर्निंग मैं सबको दूंगा, मतलब अपने अपने एक अपनी जर्नी से, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यानी ये सबको ही हर कहीं लिखना चाहिए जो भी एक बडिंग एंटरप्रेन्योर है। लोग क्या करते हैं कि उनको बस एक आइडिया आया एंड दे जस्ट जंप इनटू कि बस चलो कल से करते हैं। एंड दिस इज आई बिलीव वन ऑफ द बिगेस्ट मिस्टेक पीपल डू इज, people should give the most of the time before starting to prepare and plan for what they are going to do. क्योंकि whatever you choose, आप जो भी चुनोगे, whatever idea, whatever product, whatever company you plan to start, you have to stick with it for next 5 to 10 years minimum. आपको कम से कम 5 से 10 साल देना पड़ेगा उस आइडिया के लिए, टू मेक समथिंग रेलिवेंट, कुछ भी थोड़ा सा रेलिवेंट हैपन होने के लिए। सो यू शुड नॉट बी वेरी इम्प्रॉम्प्टो कि बस दिमाग में आया और फटाक से कर लिया दिमाग में, क्योंकि इफ दैट जील डाउन्स, यू हैव टू बी वेरी वेरी पैशनेट अबाउट व्हाट यू आर डूइंग। एंड वो पैशन तभी आएगा व्हेन यू हैव द क्लैरिटी इन योर माइंड कि हाँ मैं ये कर रहा हूँ, दिस इज व्हाट आई एम डूइंग, दिस इज हाउ आई विल फिगर इट आउट, ये स्ट्रगल्स हो सकते हैं, ये मैं ऐसे क्रैक कर जाऊंगा। So I believe this was the toughest. Then the decision to pivot was the second toughest. जब हम लोग स्कूल मैसेंजर प्लेटफॉर्म बना रहे थे, उसको हमने पिवट किया लर्निंग किट्स में, और वो भी बहुत स्पेसिफिक रीजन था। प्रोडक्ट हमारा इंसेनली सक्सेसफुल था, इंसेनली, बट इंदौर में वी कुड नॉट रेज इनफ फंड्स टू सर्वाइव ऑन मैसेंजर प्लेटफॉर्म। उसमें रेवेन्यू इतना नहीं आ रहा था जितना खर्चा हो रहा था। पीपल यूज कर रहे थे, बट लोग पैसा देने के लिए टाइम साइकिल, जो लाइफ साइकिल थी वो बहुत लंबी थी। सो वो हमको इकोनॉमिकली वायबल नहीं हो रहा था। एंड देन वी फिगर्ड आउट कि कुछ लर्निंग किट्स में करते हैं, यहाँ पर हमें अपफ्रंट पेमेंट आएगा। हमारी जो कैश साइकिल है कि भाई प्रोडक्ट पहले कस्टमर पे कर देगा हमको 3,000 4,000 रुपए, उसके बाद हम कस्टमर प्रोडक्ट डिलीवर करेंगे। तो हमारी कैश फ्लो साइकिल है वो पॉजिटिव हो गई पहले दिन से ही। सो दिस वॉज वन ऑफ द टफेस्ट पिवट्स और डिसीजन आई वुड से। उसके बाद इन जर्नी ऑफ फंड रेजिंग आई वुड से लॉट ऑफ अप्स एंड डाउन्स, एज आई सेड। कई बार हमारी टर्म शीट साइन हुई, टर्म शीट साइन होने के बाद इन्वेस्टर ने मना कर दिया, उन्होंने कहीं ना कुछ नया कुछ डाल दिया, कोविड आ गया। यस, आई वुड से कोविड वाज वन ऑफ द थिंग। लाइक हम लोग उस टाइम पे ऑलमोस्ट 70-80 लोगों की टीम थे, वी वर 70-80 एम्प्लॉइज, स्टिल फिगरिंग आउट आर बिजनेस कि वो कैसे बिकेगा, क्या होगा क्या नहीं होगा, एंड कोविड एंड एवरीथिंग शट डाउन। ओके, सो वो एक पिवटल राउंड था। बट ठीक है, एवरीवन सेल थ्रू, हम भी सेल थ्रू कर गए। वही ना, एंड में जो लाइन है, जस्ट डोंट डाई, कीप Just don't सेलिंग। time. कुछ भी करके कुछ भी करके कुछ भी करके मरो मत, जस्ट कीप सेलिंग एंड यू विल मेक थ्रू। Ajay, there is one example that you mentioned, and this is हम्म very, very interesting example. That there हम्म happened a time that when you were running your company and there was a need of the fund, you approached investor committed you, and he wanted to give you 1 crore rupees. Then it happened that he gave you one tranche of fund. हम्म आफ्टर दैट ही सेड बॉस, या तो अब मैं दे नहीं पाऊंगा। अब वो हम्म जब मैं दे नहीं पाऊंगा वाली सिचुएशन आती है, तो देयर कम्स अ टाइम, या तो मैं उतनी इक्विटी लूंगा या मैं इक्विटी डाइल्यूट नहीं करना चाहता, या ये वो वाले क्वेश्चन आते हैं, विच इज वेरी वेरी हम्म फ्रस्ट्रेटिंग इन डीलिंग विद इन्वेस्टर एट दैट पॉइंट इन टाइम। या ये आता है कि आप मेरा पैसा वापस कर दो, अब आपके पास फंड नहीं है और वो बोल रहा है हम्म मेरा पैसा वापस कर दो। और हम्म या फिर ये सिचुएशन आ जाती है कि नहीं बॉस, पैसा वैसा तो वापस नहीं होगा, बट वी आर गोइंग टू गिव यू दैट मच इक्विटी। तो उस टाइम में हाउ डिड यू नेगोशिएट? हाँ, so it is always whenever the trenches system happens, हम्म ओके, पहले तो यू अवॉइड इट।
लेकिन कई बार अवॉइड नहीं होता है, मतलब यू दिस इज हाउ द थिंग्स प्रैक्टिकलिटी में होता है कि नहीं, आप उस सिचुएशन में नहीं हो कि आपको वो टर्म्स मानने पड़ते हैं। सो वी हैव एग्रीड टू इट मल्टीपल टाइम्स। सो उस केस में आई वुड से जो एसएचए बनता है, जब भी इन्वेस्टमेंट होता है एक एसएचए बनता है, शेयर होल्डिंग एग्रीमेंट। ओके, उसमें आप सारे सिनेरियोज लिख देते हो, लाइक ट्रेंच में लिख दिया जाता है कि भाई आपका पैसा ट्रेंच में आएगा, तो आपकी जो इक्विटी है वो भी ट्रेंच में ही दी जाएगी। हम्म। ओके, अगर आप इतनी दोगे तो इतना मिलेगा, इतनी दोगे तो इतना मिलेगा, उसमें वैल्यूएशन, उसमें जो भी आपको फिलोसफी डालनी है, जो भी मैथ्स डालनी है, आप सब डाल दो। द नटशेल इज कि उसमें पूरा का जो पूरा वो होता है अपना टर्म्स एंड कंडीशंस, आप प्लेन इंग्लिश में लिख दो उसको, प्लेन इंग्लिश में, सो Did दैट वो did it कल में नहीं प्रॉब्लम। happen to you that the conflict has reached on the point कि मेरा पैसा वापस कर दो? नहीं 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 नहीं, नहीं मतलब टू ना? बी ऑनेस्ट लाइक कभी नहीं होता, मतलब इस तरह का कभी भी नहीं, क्योंकि पैसा वापस इसलिए नहीं होता है क्योंकि जो सामने वाला भी इन्वेस्ट कर रहा है, ही नोज दैट वी आर रनिंग अ बिजनेस, राइट। हम्म। और जिस दिन वो बैंक में हमें पैसा ट्रांसफर करता है, उसी दिन उसको टेक्निकली शेयर अलॉट हो जाता है। ओके, हम्म। सो अगर उसने भले ही 1 करोड़ बोला, प्रॉमिस 1 करोड़ का किया, बट पहली ट्रेंच 30 करोड़ की, 30 लाख की ही आई, तो उसको सिर्फ 30 लाख का शेयर उस दिन मिल जाता है, दैट्स इट। अब वहां से फिर नल एंड वॉइड हो गया वो, ऐसा। सो Okay. सारे टर्म्स एंड कंडीशंस रहते हैं या। Now over to Saurabh Singhai ji. He wanted to have questions. Though he has mentioned all the questions here in chat box, but I Cool, cool. want him to ask directly so that if we have probing questions afterwards. Yes, Saurabh ji, over to you. या थैंक यू सर। एक्चुअली Right. वेरी इंस्पायरेशनल वेबिनार था, और बहुत कुछ मतलब एक्चुअली एक तो फेथ जो है हमारा अपने स्टार्टअप में वो थोड़ा बढ़ गया है कि नहीं अब हम भी कर ही लेंगे। नहीं, करना ही चाहिए, तो करना थैंक यू। चाहिए। हाँ सर, एक्चुअली तो बस मेरा क्वेश्चन तो बहुत सारे थे, वो आपने पूछ ही लिए हैं, तो अभी ऐसा तो कोई बस एक यदि कोई स्ट्रगल या कोई मिस्टेक जो आप बताना चाहें कि ये आपने करी है और नहीं करना चाहिए, बहुत ध्यान रखना चाहिए, तो वो बस जानना चाहूंगा। मैं अगर एक जर्नल में दूंगा तो अगर बहुत जर्नल बोलूंगा, थोड़ा सा जो अपनी इक्विटी है उसको प्रिजर्व करके रखो। ठीक है, इक्विटी इज लाइक गोल्ड, आपको अभी समझना है, लेकिन वंस इट ग्रोज, जैसे मैंने बताया, जिस दिन कंपनी रजिस्टर कराई थी 16 मार्च 2016 को, क्लास मॉनिटर राइजोम सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड रजिस्टर कराई थी हमने, तो उस दिन 10 रुपए का शेयर था। आप एमसी में कराते हो 1 लाख का डिपॉजिट करके बैंक अकाउंट में, और 10,000 शेयर होते हैं, तो 10 रुपए का एक शेयर होता है। टेक्निकली दैट इज हाउ द कंपनी स्टार्ट होती है, बर्थ होता है उसका। वो आज शेयर 70-75 हजार का है एक। अब नाउ यू डू योर मैथ्स कि वो कितने टाइम मल्टीप्लाई हो गया। सो दैट इज द रियल, फ्रॉम आइडिया टू दैट स्केल, और वो रियल मनी है, ट्रस्ट मी, दिस इज रियल मनी। लोग, बड़े बड़े लोग आके आपको पैसा देते हैं, बड़े बड़े लोग आपके बैंक अकाउंट में पैसा देते हैं, इट्स नॉट, हर चीज हवा में नहीं है। ये जो वैल्यूएशन है, ये जो पैसा है, ये बिजनेस है। हम लोग 300 लोग एम्प्लॉय करते हैं, तो उनका पूरा खर्चा चलता है, उनकी सैलरीज, ऑफिस एक्सपेंसेस, सो इट्स समथिंग रियल। सो one thing to early entrepreneurs is that be very wise enough to value your equity from day one. ओके, जो भी आप इक्विटी डाइल्यूट कर रहे हो, किसी को भी दे रहे हो, किसी को भी दे रहे हो, देने में, एंड वन थिंग, यू शुड नॉट बी कंजूस ऑल्सो, माइजर भी नहीं होना। यू शुड नो, यू शुड बी वेरी स्मार्ट इनफ कि अगर मैं इस बंदे को या इस पार्टनर को, इस एडवाइजर को, इस इन्वेस्टर को, इस टीममेट को, किसी को भी मैं ये दे रहा हूं, तो यू शुड know the value of it, what you are giving away. Because after 4, 5, 10 years, when that currency multiplies, वो डिजिटल गोल्ड की तरह हो गया कि भाई वो 10 रुपए की चीज 75 हजार की जिस दिन हो जाएगी, यू विल रियलाइज द अमाउंट ऑफ मनी कंट्रोल you have given away, and the front person also should realize the value of it. ओके, सो वो पूरा वेजा वेज होना चाहिए। सो दिस इज वन थिंग आई वुड से कि उसको डिजिटल करेंसी, अपनी अपने शेयर्स को डिजिटल करेंसी की तरह बिलीव करो, और सबसे पहले खुद भी बिलीव करो उसमें कि तुम उसको तब जब वो 100 रुपए, 10 रुपए, 1000 रुपए का भी है वैल्यूएशन में, तो भी यू शुड बी हैव क्लैरिटी इन योर माइंड कि ये लाख रुपए की चीज है जो मेरे पास है, मैं इसको लाख रुपए की बनाऊंगा। और उसको, उस तरह के पार्टनर्स को, उस तरह के लोगों को दो जो उस बिलीव से अलाइन हो सके। क्योंकि अगर वो भी अलाइन होंगे, जैसे तुम्हारा कोई टीममेट आया, वो टीममेट भी जब वो बिलीव करेगा कि ये जो मेरे पास 5, 10, 50 शेयर हैं, ये 1-1 लाख के हो सकते हैं, इनकी वैल्यू ये हो सकती है, तो वो भी अपने एफर्ट्स को उस तरीके से डालेगा उस कंपनी को आगे बढ़ाने के लिए।
सो और जब वो सब बढ़ता है, जब सब मिलते हैं, आज के टाइम में आई एवरीवन से व्हेनेवर आई गो टू ऑफिस कि आज 300 लोग मिलके दिन रात क्लास मॉनिटर को आगे बढ़ा रहे हैं, लाइक दे आर मेकिंग दिस शिप को। एंड अब पहले जब स्टार्ट किया था तब 2 लोगों की एफर्ट थी, आज 300 लोगों की एफर्ट है। आज इसलिए इतना वो कंपाउंड हो रहा है, एवरीथिंग इज कंपाउंडिंग। ठीक है, हम लोग जो ईयर और ईयर वैल्यूएशन में, रेवेन्यू में, मल्टीप्लीकेशन में कंपाउंड हो रहे हैं, वो इनकी वजह से। सो आपको उस डिजिटल करेंसी को, आपके शेयर्स को डिजिटल करेंसी की तरह बिलीव करना पड़ेगा, उसकी वैल्यू उस तरह से करनी पड़ेगी, अपनी टीम को वैल्यू करानी पड़ेगी, अपने पार्टनर्स को वैल्यू करानी पड़ेगी, और वहीं से वो चीज मल्टीप्लाई होगी। एक क्वेश्चन और जो चैलेंज अब हम फेस करते हैं कि हम जो एम्प्लॉयज को ऑफर करते हैं, मतलब मार्केट जो बैंक्स वगैरह सेल्स पर्सन को जो बैंक्स ऑफर करते हैं, हम उससे कहीं ज्यादा ऑफर कर रहे हैं। फिर भी हम्म। हमें सेल्स पर्सन को एक्वायर करने में और रिटेन करने में बहुत रिटेंशन में तो नहीं आता, पर एक्वायर करने में बहुत चैलेंजेस आते हैं, क्योंकि एक ठीक है बार जो अब। जुड़ जाता है वो तो हम्म। रहता है, पर हम्म। जो नहीं आता उसको कैसे हम अच्छे पर्सन्स को अट्रैक्ट करें, क्या हो, ओके वी आर बिल्डिंग समथिंग न्यू गुड, एंड वी आर ऑल्सो ऑफरिंग मोर सैलरी देन अदर मार्केट स्टैंडर्ड। ओके, सो ये मार्केटिंग में ही, चैनल में ही, आप डिपार्टमेंट में ही वो टॉकिंग अबाउट, कि किसी और डिपार्टमेंट में भी, टेक्निकल में? सेल्स सेल्स अच्छा, सेल्स सेल्स में। सेल्स सी डिपार्टमेंट। से अब क्लास मॉनिटर के हिसाब से तो मैं ये बता सकता हूँ आपको कि लाइक क्लास मॉनिटर पर्टिकुलरली सेल्स ड्रिवन डिपार्टमेंट ही है हमारा। मतलब हमारे यहाँ ऑलमोस्ट 70% लोग सेल्स में ही है, जो हमारा मेन लर्निंग किट का प्रोडक्ट है। सो उसके एक्सपीरियंस से बता सकता हूँ, चर्न रेशियो तो रहता है, चर्न काफी हाई है। ठीक है, क्योंकि अब जो हमारा जैसे ऑडियंस है, जो हमारा सेल्स का एक डेमोग्राफी है, जो सेल्स एजेंट आते हैं हमारे यहाँ पर, वो यंग ग्रेजुएट्स होते हैं। ठीक है, या तो वो ग्रेजुएशन कर रहे होते हैं या करके जस्ट निकले होते हैं। ठीक है, जो कि कंफर्टेबली इंग्लिश बोल सकते हैं, समझ सकते हैं और कम्युनिकेट कर सकते हैं इंग्लिश में। सो उस हमको वहाँ एक चर्न रेशियो हमको डिफाइन करके रहना पड़ता है। इसमें तो वही सिंपल एक जो प्रैक्टिकल बिजनेस की एडवाइस है वही दे सकता हूँ, कि चर्न रेशियो अपना एक्सेप्ट करो कि इतना होगा ही होगा। दूसरा, एक अच्छा ऑफिस, एक अच्छा एनवायरनमेंट बनाओ, ये भी बहुत बड़ा फैक्टर होता है। ऑफिस कल्चर बनाओ, उनसे बात करो, उनको टाइम दो। ये सॉफ्ट स्किल्स जो होती हैं बहुत मैटर करती हैं एक स्टार्टअप में। मतलब मेरी जर्नी में तो आई वुड से मैं पहला डेवलपर ही इसलिए ला पाया क्योंकि मेरे सॉफ्ट स्किल्स, मेरी रिलेशनशिप उस डेवलपर के साथ में अच्छी थी, बॉन्डिंग अच्छी थी। तो आई कुड मेक अ डील कि भाई तू ये पूरा कैश में ना करके ये तू शेयर से ले ले, और ये थोड़ा कैश से कर ले, और तू लाइफ टाइम मेरे साथ जुड़ जा, मैं तेरे को भी बनाऊंगा। टू मेक देम बिलीव यू नीड टू यूज योर सॉफ्ट स्किल्स। सो वही चीज मैं बोलूंगा यहाँ पर भी, कि सेल्स टीम में भी आपका जो हियरार्की है, जो मैनेजर्स होंगे, सब मैनेजर्स होंगे, एग्जीक्यूटिव्स होंगे, उनके बीच में टीम बॉन्डिंग थोड़ी करो, ताकि जो आए वो टिके। टिकेगा तो वो फिर रेफरल चला उसमें, लाइक क्योंकि हायरिंग रेफरल से बहुत अच्छी होती है। अगर आपका बंदा जो वहां काम कर रहा है, अगर उसको भी आप कुछ इंसेंटिव दे दो कि अगर सामने वाला बंदा कोई आएगा, हम लोग क्लास वाटर में फॉलो करते हैं कि अगर आप किसी बंदे को रेफर करते हो और वो 3 महीने रुकता है, तो हम आपको एक कमीशन, एक हायरिंग फी देते हैं, जो कि हम पहले रिक्रूटर्स को देते थे। तो वो बहुत अच्छी चीज होती है। इन अच्छा ऑफिस में थोड़ा स्पेंड करना चाहिए, तो उसको गुड फील गुड फैक्टर आता है। भले ही वो काम सेम कर रहा है, लेकिन एक जब उसको एटमॉस्फेयर अच्छा दिखता है, उसको उसका ऑफिस, उसके कलीग अच्छे दिखते हैं, तो वो भी बहुत बड़ा फैक्टर होता है टैलेंट को अट्रैक्ट करने का और रिटेन करने का। गूगल क्यों फ्री में खाना बांटती है? लाइक गूगल बहुत प्रूव नहीं है, गूगल गिव्स फ्री फूड, फ्री ये सब फल्ला ढिमका। सैन फ्रांसिस्को आप जाओ या जो भी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, क्यों ये सब बेनिफिट्स देती हैं? दिस इज लाइक टू क्रिएट दी फ्रेंडली एटमोसफियर अराउंड। उसको ये लगता है कि भाई काम, जो सेल्स एजेंट होगा, कि काम तो मुझे ये सेल्स का ही करना है, यहाँ करूँ या वहां करूँ, लेकिन मेरा यहाँ मैनेजर अच्छा है, कम से कम सुनता मेरी है, मेरा एनवायरमेंट अच्छा है, थोड़े बेनिफिट्स हैं छोटे मोटे, टिक जाता है वो। सो दीज आर द थिंग्स, सॉफ्ट स्किल्स तो चलानी पड़ती है। अच्छा, एक क्वेश्चन मेरी तरफ से, व्हेन डिड यू गो हम्म। फॉर दिस फाइ फॉर्मल वैल्यूएशन, लाइक एट द टाइम हम्म। सीड फंडिंग और आफ्टर दैट? नहीं, आफ्टर दैट। सो प्री सीरीज ए पे ही कुछ लोग आते हैं, फिर वो वहां पर फॉर्मल होती है। वैसे इंडियन गवर्नमेंट की गाइडलाइंस में तो लिखा हुआ है कि आप हर बार करानी पड़ती है, बट दैट इज नॉट मैंडेटरी, ऐसा कुछ नहीं है कहीं भी। और कोई वैल्यू भी नहीं बनती, क्योंकि जो नॉर्मल सी है वो कर भी नहीं पाएंगे, क्योंकि आपके पास कोई टेंजिबल नहीं है। आप एंजल में क्या बोलोगे, क्यों आपने 2.5 करोड़ का कीमत लगाया एक आइडिया का? किस लिए लगाया? आपके पास ना डेस्क है, ना कंप्यूटर है, ना बेंच है, ना ऑफिस है, कुछ भी नहीं है, सिर्फ एक आदमी है जिसके दिमाग में कुछ खुरापात है। सो नहीं, हाउ बट कैन अगर बी? ये मान लो आपने अपनी कंपनी का वैल्यूएशन 5 करोड़ करा, पांच हाँ करोड़ पे 2% का डाइल्यूशन करके आपने दस हाँ लाख रुपया ले लिया,
हाँ 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 हाँ। Now when you take 10 lakh rupees, तो how did you report it to the, because शेयर का वैल्यू abnormally बढ़ गया, right? नहीं तो वो नहीं, वो आपने चल जाता है 10, वो। एमसी डज नॉट कॉन्ट्रडिक्ट ऑन दैट। एमसी डज नॉट your कॉन्ट्रडिक्ट, CA उनको भी can, आजकल। right? हाँ हाँ, आजकल नहीं होता, मतलब इतना नहीं है कि, क्योंकि स्टार्टअप्स में हम कॉन्ट्रडिक्ट तब करेगा जब हम कुछ नया कर रहे हो। हर स्टार्टअप ही ऐसा कर, हर Right. स्टार्टअप है। आप उसको लाख रुपए की वैल्यूएशन से तो चालू कर नहीं सकते हो। लाख रुपए में अगर आप वैल्यूएशन चालू करोगे, 10,000 में कोई धंधा तो चालू होने वाला नहीं है। तो मतलब वो 2-2.5 करोड़ 5 करोड़ की वैल्यूएशन तो होगी ही होगी, एक रीजनेबल, जिसमें आप 20-25-30 लाख उठाओगे। सो ये मैथ सब गवर्नमेंट के पास भी है, ठीक है। सो अनलेस यू आर नॉट डूइंग समथिंग बहुत ही आउट ऑफ द बॉक्स और इलीगल, ये प्रॉब्लम्स नहीं आती हैं। एंड ये सब हमको एंजल सीड प्री सीरीज ए तक हमको इस सब में पचड़ों में पड़ना भी नहीं चाहिए। दो कुछ लोग हमको सजेस्ट करेंगे Very कि करो, important. ये करो, 25,000 की, हाँ 25,000 की ये बनाओ, This एक is what रिपोर्ट I have been बनवाओ, ये बनाओ, teaching. दोज आर जस्ट। हाँ, मैं हमेशा से हम्म ये समझाता आया हूँ, बट आई वांटेड टू कम इट फ्रॉम द हॉर्सेस माउथ, हम्म इसलिए बिकॉज यू हैव डन दैट थिंग, तो हाँ एग्जैक्टली। एक्चुअली प्री नहीं, बिकॉज अब इसका है। कोई सेंस नहीं है अभी। हाँ, अब हम जहां जब वंस यू आर रेजिंग इन करोर्स, वंस यू आर रेजिंग इन करोर्स, क्योंकि कंप्लायंसेस का भी कॉस्ट होता है। एज अ स्टार्टअप यू हैव टू सेव एवरी कॉस्ट। कॉस्ट जो बचा लोगे वो कंपनी में लगा लोगे, रेवेन्यू आ जाएगा। सो कंप्लायंसेस का, और आजकल इंडिया में बहुत कंप्लायंसेस कॉस्ट है, जीएसटी वीएसटी है, बहुत सारा कंप्लायंस। सो जब आप करोड़ों में वो करते हो, रेस करते हो, ठीक है, तो फिर वहां गेम बहुत चेंज हो जाता है। वहां पर कंप्लायंसेस बहुत आते हैं, वहां पर वैल्यूएशन रिपोर्ट आ रही है, वहां पर इनफैक्ट आपको फाइंडर फी देनी पड़ती है, शायद हमने बताया नहीं। प्री सीरीज ए में आपको फाइंडर फीस लगती है भाई। अगर आप और जो हमने यूज करी है कि मतलब इस तरह के भी बिजनेसेस हैं जो कि सिर्फ आपको इन्वेस्टर से कनेक्ट करते हैं, उनका काम ही है कनेक्शन कराना, बस और कुछ नहीं करेंगे। उनके पास एक डायरेक्टरी होती है सारे इन्वेस्टर्स की, किस इंडस्ट्री में कौन सा इन्वेस्टर इन्वेस्ट करता है, कितना इन्वेस्ट करता है, वो किस तरह का इन्वेस्ट करता है, उसको किस तरह के लोग पसंद है, वो कहाँ बेस्ड है, उसका ईमेल आईडी क्या है, उसमें कौन सा पर्सन है। उस तरह की वो डायरेक्टरी बना लेते हैं, अपना ऑफिस खोल लेते हैं। उनको इन्वेस्टमेंट एनालिस्ट बोलते हैं। आप क्या करो, तो एज अ फाउंडर आपके दो काम, दो तरीके हैं। या तो आप 1,000 इन्वेस्टर्स के पास अलग अलग करके जाओ, फिर उनको अलग अलग बताओ और उनसे रीच आउट करो और अपनी रिसर्च करो। नहीं तो दूसरा तरीका होता है सिंपल सा, कि आप ऐसे इन्वेस्टमेंट एनालिस्ट के पास जाओ, उनको अपना पिच डेक, बिजनेस, म्यूचुअल प्लान वगैरह सब दे दो उनको, ठीक है। और वो एक फाइंडिंग फीस पे आपको लोगों को कनेक्ट करना शुरू कर देंगे। तो अगर उनके थ्रू कोई भी फंड कन्वर्ट होता है, तो उसका 2 से 3% डिपेंड, फंड साइज क्या है, क्या रेज हो रहा है, आप वो कमीशन लेते हैं। तो वो नहीं, पहले एंड डू दे टेक एनी साइनिंग अमाउंट ऑफ दिस थिंग, मतलब डिड यू हमसे पे? सब हमसे हमसे सबने मांगा, तो हमने किसी को नहीं दिया। अच्छा, वेरी नाइस। सो इट इज योर, सो इट इज योर, हाँ सो इट इज योर ओन, क्या नाम है, निगोशिएशन स्किल्स। आपके बिजनेस में थोड़ी सी भी दम है, आपके बिजनेस में थोड़ा सा भी, एंड प्लीज, एंड द सेकंड इज लाइक वी डोंट हैव मनी। बिजनेस कर रहे हो ना, तो गरीब दिखा बनने में कोई नुकसान नहीं है। यू शुड बी लाइक, यू शुड सेव मनी। एंड जो बोला ना कि आपको बैलेंस शीट पे पकड़ होनी चाहिए, वो यही है कि आप जहां जहां पैसा बचा सकते हो, आपका बैलेंस शीट अगर स्ट्रांग रहेगा, और वो भले 5,000 हो, 10,000 हो, 60,000 हो, 1 लाख हो, बट वो बच रहा है ना, वो दिख रहा है, तो आप वो 1 लाख कहीं और खर्च कर सकते हो। सो हमारे लाइक हर कोई मांगेगा आपसे, मांगने को तो सब, क्योंकि वो भी बिजनेस कर रहे हैं ना। वेलकम आपके, हमको 50 लाख अपफ्रंट चाहिए, वो 50,000 अपफ्रंट चाहिए, उसके बाद हमको 3% चाहिए। एंड वी वर लाइक 50,000 तो भूल जाओ, ठीक है ना, ये 3% भी नहीं देंगे, हम देंगे 1%। फिर 1 से 1.5, 1.5 से 2, 2.5, जितना भी हो सके म्यूचुअल एक अपना करके। बट उससे क्या होता है कि दे विल इंट्रोड्यूस यू टू न्यूमरस, कि वो एक एनालिस्ट आपको कम से कम 100-150 लोगों से मिला देगा, वो आपकी पिच डेक भेज देगा राइट लोगों तक, तो इंट्रोडक्शन हो जाएगा, वो देख लेगा। जो काम आप 6 महीने में करते हो, वो आपका 1 महीने में काम कर देगा, इंट्रोडक्शन वाला। उसके एंड बाद मीटिंग वीटिंग सब कुछ, कन्वर्जन आपको करना है, सब आपके ऊपर है, उसका काम सिर्फ उसका काम मेल भेजना है, कनेक्ट करना है, कम अप। एंड ऑन ऑन मेल एंड ऑल दिस थिंग्स, बस 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 वो मीटिंग वो शेड्यूल करवा देगा मेल आपको, करा देगा, वो कनेक्ट कर देगा, वो पहली मीटिंग भी करा, वो जूम पहली टीम की मीटिंग भी करा मीटिंग देगा, मतलब करवा पहली देगा। मीटिंग फिक्स करा के बस। हम्म। बस 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 उसके बाद फर्स्ट मीटिंग से लेकर आखिरी मीटिंग तक सब आपका काम है, ड्यू डिलिजेंस, सब कुछ आपका काम है, आपका हेडेक है। और कन्वर्ट हो जाता है, तो वो 2-3% जो भी होता है, हमने 3% भी एक बार दिया है, बट अब हम 2-2.5% देते हैं, विच अमाउंट बड़ा हो जाता है, बट वो वर्थ इट होता है, क्योंकि आपको वो फिर ऐसे लोगों से मिलवा देता है जो कि आपको पता भी नहीं होते हैं।
आप उनके ईमेल आईडी निकालोगे, उनसे कनेक्शन निकालोगे, उनसे पहली कॉल करने में आपको 4-5 महीने लग जाएंगे, वो आपको एक बार में करा देते हैं। और आपका टाइम भी बचता है, क्योंकि उसको पता है कि इस तरह का इन्वेस्टर इस तरह के स्टार्टअप में करता है और इस तरह का नहीं करता है, तो उनके पास वो रिकॉर्ड्स भी होते हैं। तो आप रेदर देन आप 100 लोग 100 गलत इन्वेस्टर के पास जाओ, आप अपनी एनर्जी को वो 50 जो सही इन्वेस्टर्स हैं उन पे लगाओगे, तो आप जल्दी कन्वर्ट कर लोगे। Actually, because it was a very, very, very fine discussion with you. And actually, in the entire process, I could get the endorsement of my ideas that whatever I'm doing, it is working. In कूल कूल case of angel investments or seed funding, till that हम्म time, we are developing one very beautiful thing that is called Indian way of entrepreneurship. And in the end, I was thinking in the beginning that you have approached thoroughly completely on the American or Western way of entrepreneurship. But in the end, whatever the things have come out are the हम्म same, that you have to understand the most precious thing that you have in your company is your equity and the एग्जैक्टली shares that you are holding. So you should be very conservative in shelling it out. Second thing is that you have to be very prudent when it comes to spend money. That is again हम्म a very, very important thing. Third thing that you talk about Indian way of entrepreneurship thing is the culture. हम्म In your case, it was certain that because of Derek and this Piyush moves, you हम्म were actually fortunate that you were very young and you got the right guys. हम्म Here we always suggest that these kind of, like in case of particularly a CA who is a gold medalist sitting in Oman, was a very strategic investment because he could एग्जैक्टली actually connect you with the right guys, and when it came to prepare term sheets and the papers for the next round, he might have helped you. एग्जैक्टली Which is something I always say that people who believe in what you believe एग्जैक्टली should be in your team. Like in case of Derek, he was believing in Vikas Rishishwar as a founder. And एग्जैक्टली because of that love and faith, he invested. In case of Piyush, it is that he knew that if he takes up this company in the right position, and if he connects you with the right guys, with the right paper preparation and everything, he'll be able to take it to the next level. So things are very much in the same line, and I'm really impressed with the way you presented and the way the passion you have shown. So we are very thankful. I have learned a couple of things which were very new to me. Not कूल new कूल to me, actually. I believed when I was in my 20s and 30s, but afterwards I started thinking कि यार यहाँ ऐसे ही होता है. नहीं, And हाँ होता है। वो इंदौर में ज्यादा होता है. जैसे मैंने एग्जैक्टली एग्जैक्टली दो वेंचर्स खड़े करे और दोनों वेंचर्स में मेरे साथ में कुछ गड़बड़ हुई, तो मुझे रियलाइजेशन ये हो रहा है कि had I been that lucky कि मेरे स्टार्टिंग वेंचर्स में मुझे कोई सीए मिलता और कोई लॉयर एग्जैक्टली मिलता would have been on my board, तो वो चीजें मेरे लिए आसान हो जाती. एंड एग्जैक्टली वो मैंने बाद में बी सीखा. डिसिप्लिन बी या डिसिप्लिन, दैट इज व्हाट लाइक मतलब द क्लोजिंग एंड इज लाइक धंधा, लाइक यू आर क्रिएट हियर टू क्रिएट अ बिजनेस। स्टार्टअप थोड़ा फैंसी वर्ड हो जाता है, बट आइडियली यू शुड कॉल इट अ बिजनेस, बिजनेस. कि भाई तुम बिजनेस बना रहे हो, और बिजनेस में तुम सिंपल सा एंड गोल ये होना चाहिए कि कैसे तुम वैल्यू बना सकते हो, कि तुम कैसे 75 पैसे की चीज को 1 रुपए में बेच सकते हो और कैसे स्केल कर सकते हो। सो अगर जब सब चीज उधर अलाइन होगी, और उसमें डिसिप्लिन सबसे बड़ा, और चीजें टाइम लेती हैं, ये दूसरा मंत्रा जो सीखा हमने, कि कुछ भी रातों रात नहीं होता है। क्लास मॉनिटर इज 8 years ओल्ड नाउ, एंड आई वुड से इट इज स्टिल अ लॉन्ग जर्नी अहेड बिफोर वी कैन हैव अ मीनिंगफुल एग्जिट फॉर एवरीवन। बट हाँ, दिस इज कि अब हमारे पीछे ऑलरेडी एक कंसोलिडेटेड मास है, एक ब्रांड है। तो अब जर्नी, ऑल्दो स्ट्रगल्स हैं हर तीसरे दिन, लेकिन लेकिन एक जर्नी है, एक मोमेंटम है कि हम वहां तक पहुंच जाएंगे, वो हॉराइजन के हम पास पहुंचते जा रहे And how much it helped you to have right हैं। lawyers and right CA on board? सीए Negotiation. लाए, सीए लॉयर्स टू बी ऑनेस्ट इतना नहीं, टू बी इतना इतना ज्यादा नहीं कुछ भी। सबसे ज्यादा जो हमको हेल्प करा बस वो राइट सेट ऑफ हमारे इन्वेस्टर, जो अर्ली इन्वेस्टर्स थे, वो Invest. सबसे ज्यादा। जैसे हमारे पास पीयूष हुए, उसके बाद अगर मैंने बताया नहीं, हमारे पास
रिलायंस के सीएफओ हैं, रिलायंस के सीएफओ विवेक वेंकटेशन, वो है हमारे पास। तो वो रिलायंस के अनिल, वो क्या नाम है अपना, मुकेश अंबानी के साथ में डायरेक्ट फेस टू फेस हफ्ते में 2 मीटिंग किया करते थे। वो उस पोजीशन पे थे, रिलायंस जो फाइनेंशियल है उसके वो ग्रुप सीएफओ थे। तो काफी बड़े, तो उन्होंने ज्यादा अमाउंट नहीं, 20-25 लाख रुपए डाला। लेकिन उनके थ्रू आने से वो जो मेंटोरशिप हमें मिली, उन्होंने जो हमको कुछ फाइनेंशियल्स के हमको कि बैलेंस शीट आपको कैसे मैनेज करके चलनी है, भले ही आप प्रॉफिट्स नहीं में नहीं हो, बट वो प्रॉफिट कैसे प्रोविजन करना है, क्या सबसे बेस्ट इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स होते हैं कि आपको ये आर&डी में दिखाना है, ये कैरी फॉरवर्ड करना है लॉस, और ये तो वो फॉरवर्ड थिंकिंग कि भाई जब आप आगे चल के आईपीओ का सोचोगे, क्योंकि हम लोग आईपीओ के बारे में काफी डिटरमाइंड हैं, मतलब हम लोग का जो एम है वो आईपीओ ही है एक्चुअली। तो उन्होंने वो चीज हमको पिछले 3 साल पहले बता दी थी कि तुमको ये बैलेंस शीट में जो जब फाइलिंग करेंगे हम, तो ये हमारे हमारे सीए भी नहीं बता पाए थे, क्योंकि सीए भी क्या है, जब ये बहुत बड़ा स्ट्रगल था, लिटरली ऑनेस्टली एक बहुत बड़ा स्ट्रगल था हमारा। जब हमने क्लास मॉनिटर स्टार्ट किया था ना, जितने भी हमारे नॉर्मल सीए थे इंदौर के, उनको यही नहीं पता कि स्टार्टअप होता क्या है। उनको स्टार्टअप की फाइलिंग नहीं करनी आ रही थी, उनको वैल्यूएशन सर्टिफिकेट छोड़ो, उनको ये भी नहीं पता कि ये क्या होता है, मतलब वो टिपिकल सीए है इंदौर में। उनको पता है कि भाई तुम्हारी तुम्हारी दुकान में इतना धन, इतना राशन है, इतना ये है, ये वो वाले थे। ये सबसे बड़ा स्ट्रगल था। मतलब हमारी इनफैक्ट पहले 2 साल की जितनी भी फाइलिंग हुई है वो सब 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 खराब फाइलिंग है। मतलब हमने कुछ भी फाइलिंग कर दी एमसीए में, वो गलत फाइलिंग है, मतलब जो टेक्निकली देखा जाए। बट ठीक है, गवर्नमेंट में क्या होता है कि भाई हम उस टाइम इतने बड़े थे ही नहीं कि वो गवर्नमेंट के लिए मैटर नहीं करता है। अब जब हम बड़े हैं, हम सीरियस बिजनेस कर रहे हैं, हम करोड़ों का रेवेन्यू है, करोड़ों के ट्रांजेक्शन हैं, तो अब हम कंप्लाइंट है पूरा। अब हमको पता है कि भाई, मतलब हमने शेयर, जो हमारे शेयर भी जो इशू होते हैं ना, हमारे जो पहली जो मेरा एंजल इन्वेस्टर का जो शेयर इशू किया था, वो तक मैंने गलत किया हुआ है। मतलब वो हमारे सीए ने हमारा गलत करवा दिया फाइल। वो नए शेयर बनने चाहिए थे, उसकी जगह उसने मेरे शेयर उसको ट्रांसफर कर दिए। तो टेक्निकली वो 5 लाख मेरे बैंक अकाउंट में आना चाहिए था, रेदर देन कंपनी अकाउंट में जाने के लिए। तो इस तरीके से ब्लंडर करे हुए हैं, ये ब्लंडर्स हुए हुए हैं। तो ये क्या होता है कि उस टाइम तो सीए तो बिल्कुल ही नहीं, और इनफैक्ट अभी भी इतना नहीं है। लेकिन जो इंडस्ट्री वेटरन्स हैं, तो कोशिश करो, जो भी यंग फाउंडर्स हैं या जो भी है, कि आप जो लोग ये साइकिल कर चुके हैं या जो मैसिव स्केल में ऑपरेट कर रहे हैं, वो किसी भी कैपेसिटी में अगर आ सके, छोटी भी कैपेसिटी में आ जाए, तो वो आपको एक इंसाइट दे देगा छोटी सी, या एक आपका कनेक्शन बनवा देगा। जैसे जो विवेक आया, जो रिलायंस का सीएफओ है, वो कम से कम अपने साथ 5 बड़े लोगों को लेके आया। उसने भले ही हमसे 20 लाख रुपए डाला, लेकिन उसने अपने सर्कल से कम 50, कम से कम 1 करोड़ रुपए हमारा डलवाया था, जब हमें बीच में जरूरत थी। और वो सब अपने 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 सेक्टर में बहुत नामी लोग थे, मतलब बड़े बड़े लोग थे। तो उनसे जो हमें कनेक्शन मिले, तो वो ये कि ये पार्टनरशिप्स हैं, इन्वेस्टमेंट एक पार्टनरशिप्स हैं। और इंडिया में अभी जो स्टेज है वो इतना अर्ली है, इतना मैच्योर नहीं है, कि आपको बेनिफिट्स निकालने पड़ेंगे, आपको कनेक्शंस निकालने पड़ेंगे। और कभी कभी वो इनडायरेक्ट कनेक्शंस होते हैं, मतलब कभी इनडायरेक्ट बेनिफिट्स होते हैं, कि वो आपको कुछ ऐसी एडवाइस दे देगा बिजनेस में, जो कि आप फॉलो कर लोगे और आपको बाद में समझ में आएगा कि जैसे पीयूष की एक एडवाइस है सिंपल से, कि अपना बैलेंस शीट का जो मैनेजमेंट है वो प्रॉपर होना चाहिए। मतलब पीयूष ने हमको, हमारे पास एक गूगल ड्राइव की एक्सेल शीट है, 2018 से लेकर आज तक एक एक रुपए का खर्चा उस एक्सेल शीट पे है, मंथ वाइज। एक एक रुपए का खर्चा, मतलब ये बहुत बड़ी चीज है। मतलब हमारे पास जब हम 5 लाख रुपए महीने का खर्चा करते थे, से लेकर 1.5 करोड़ 2 करोड़ का जो हम महीना खर्चा कर रहे हैं आज के टाइम में, हर का एक एक रुपए का खर्चा है हमारे पास उस पर एक एक्सेल शीट में। वेरी सो नाइस। उससे क्या हुआ कि बैलेंस, हमारा जो फाइनेंशियल डिसिप्लिन था वो बहुत ज्यादा अलाइंड था। और उससे दूसरा बेनिफिट, कि अब जो हमारे नए इन्वेस्टर्स आते हैं, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर से हम बात करते हैं, वेंचर कैपिटलिस्ट से बात करते हैं, जो बड़े फंड्स आते हैं, उनको ये सब कुछ चाहिए होता है। तो आपको वो डेटा प्रिपेयर करने के लिए जो महीनों लगते हैं, हमारे पास ऑलरेडी रेडी है सारा, क्योंकि हमने ऑलरेडी कर रखा है। सो जिस तरह से, और हमको हमारे पास वो एक नब्ज है, हमको पता है हमारा बैलेंस शीट में, कैश फ्लो में, कि हमारा मार्जिन कंट्रीब्यूशन क्या है, हमारा एबिटा क्या है, हमारा कैक क्या है, हमारा क्या क्या। तो क्योंकि जो ये जो इन्वेस्टर्स आएंगे, अब ये जो प्री सीरीज ए वाले जो 100 करोड़ 200 करोड़ की वैल्यूएशन पे डालेंगे, जो 10 20 50 करोड़ रुपए डालेंगे, उनको एक एक चीज का हिसाब चाहिए, उनको एक एक चीज का मैथ्स चाहिए, बिजनेस मॉडल चाहिए। वो हवा में नहीं करते हैं, वो उनको सब कुछ फंडामेंटली चाहिए। और वो हम क्यों कर पाए, क्योंकि वो हम पिछले 5 साल 6 साल से हम एक एक चीज का कर रहे थे, तो हमारे लिए वो कंपाइल करना लिटरली बहुत आसान। और पीयूष ने हमको ये सिखाया कि ये तुमको बाद में आके काम आएगा, बाद में काम आएगा। हमको पहले ये लगता था कि ये हमको, हम पे नजर रख रहा है। मतलब दैट वाज आवर फीलिंग एज अ यंग एंटरप्रेन्योर, कि हमको 2-2 रुपए के लिए भी हमको ऐसे कर रहा है, ये हमको क्या आगे करेगा। बट आज पीछे मुड़ के देखते हैं तो इट इज लाइक कि वो हमको फाइनेंशियल डिसिप्लिन लेके आया, हमारे बिजनेस के मॉडल पे हमको कंट्रोल लाया, कि भाई
हम कहाँ खर्च कर रहे हैं, कहाँ से पैसा आ रहा है। तो हमारी फॉरकास्टिंग बहुत एक्यूरेट होने लगी, हमारे सारे नंबर्स पे कंट्रोल था। तो आज के टाइम में लिटरली आपको 2-3 अगर हम शीट्स में पूरा क्लास मॉनिटर का पूरा बिजनेस निकल के आ जाएगा, 2-3 एक्सेल शीट। वेरी नाइस। सो एक दिस क्वेश्चन इज दिस इज व्हाट। ये बनता है कि यू हैव एक्सप्लेन वन वेरी क्रिटिकल थिंग इन अ वेरी सटल मैनर। थोड़ा सा उसको एलिब्रेट करने की बात है कि जब ऑन बोर्ड कर रहे हैं इन्वेस्टर्स को, तो यू हैव हम्म। टू इशू न्यू शेयर्स, ना कि पार्टनर्स के, दो पार्टनर के बीच में जो शेयर है नहीं नहीं, वो हाँ शुरू हो हाँ हाँ, जाए। एग्जैक्टली। इसको हम्म थोड़ा सा एलिब्रेट करो, क्योंकि यहाँ बहुत सारी कंपनीज उस स्टेज पे आ गई हैं जो हम्म। इसमें जाने वाली हैं। एग्जैक्टली तो ये सबसे मतलब बहुत ही हमने फुलिश चीज करी थी, क्योंकि पता नहीं, और ये सबसे गजब बात है कि सीईओ को भी नहीं, सीए ने भी ऑब्जेक्ट नहीं करा और फाइल कर दिया था। होता क्या है कि जैसे आपने क्लास में, जैसे आप कोई कंपनी रजिस्टर कराओगे तो दो मिनिमम फाउंड डायरेक्टर्स लगते ही लगते हैं, और दोनों को कुछ ना कुछ हिस्सा होना जरूरी होता है। तो भले ही एक 99.99% रख ले और भले ही दूसरा वाला एक शेयर रखे, लेकिन दो लोग होते हैं। अब वो 10,000 शेयर से कंपनी चालू हुई। अब उसके बाद आपने पहला इन्वेस्टमेंट लिया। तो मान लो अभी एक केस में कि दो 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 डायरेक्टर हैं, दोनों के पास 50-50%। ठीक है, दोनों के पास 5,000 शेयर है। अब किसी बंदे ने एक, मान लो हमको 10 करोड़ का, 10 लाख का इन्वेस्टमेंट किया 1 करोड़ की वैल्यूएशन पे, मतलब 10% उसको हमको कंपनी का देना है। ठीक है। तो इसमें क्या होगा कि जो वो 10 लाख रुपए आएगा वो कंपनी के करेंट अकाउंट में आएगा। आप जो फाउंडर्स हैं, जो डायरेक्टर्स हैं, उनके बैंक अकाउंट में नहीं आएगा। वो कंपनी के अकाउंट में आएगा, सीधे करेंट अकाउंट में डायरेक्टली। और कंपनी जो 10,000 शेयर्स थे, वो 10% शेयर एक्स्ट्रा ऐड करेगी। और वो जो नए 100, 110 शेयर बनेंगे, वो उस बंदे को देगी। हम्म। ऐसा। सो कंपनी के पास अभी जो 10,000 शेयर थे, 10% दिया तो 1,000 शेयर नए ऐड हुए, तो अब कंपनी के टोटल नंबर ऑफ शेयर हो गए 11,000। हम्म। ऐसा। तो मिस्टर ए के पास 5,000, मिस्टर बी के पास 5,000, और मिस्टर सी जो नया इन्वेस्टर था, अब उसके पास 1,000 शेयर है। तो हम्म। कंपनी के टोटल शेयर हो गए 11,000। ये, और जो 1,000 शेयर आए हैं, वो कंपनी ने क्योंकि नए शेयर इशू करे, तो वो कंपनी के पैसे हैं। वो फाउंडर के पैसे नहीं है, वो मैनेजर के पैसे नहीं, डायरेक्टर के पैसे नहीं है। वो पैसे अब यूज होंगे कंपनी को चलाने में, कंपनी को ग्रो करने दिस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट, ऑल ऑफ यू गॉट टू अंडरस्टैंड कि अगर ये पैसा पार्टनर के अकाउंट में चला गया तो वो पार्टनर की अर्निंग में भी शो हो जाएगा। में। एग्जैक्टली, ये फिर और वो, उसको सेकेंडरी बोलते हैं, उसको हाँ, सेकेंडरी बोलते हैं। सेकेंडरी जो बोलते हैं। और उसको सेकेंडरी पार्टनर फिर इन्वेस्टमेंट बोलते हैं। कंप्लायंट हो जाएगा उस चीज के लिए हम्म। कि पार्टनर की वो इनकम हो गई, भले ही वो कैसे भी, और फिर उसके लिए, वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स में चला जाएगा। हाँ। और मुझे इस पे 50,000 रुपये भरने पड़ गए थे एक बार, ये सेम मिस्टेक आई डिड। एंड बिकॉज मेरा सीए को नहीं समझ में आया, हम लोगों ने फॉरवर्ड कर दिया, और फिर जब उस शेयर को बायबैक, मतलब वो वापस रिवर्स करने की बात आई, तो हमको हम्म। बायबैक करना पड़ा। बायबैक करने पे हमारे इनकम टैक्स जो बन गया था उस पर्टिकुलर चीज पे, दैट वाज हम्म। अराउंड 47-48 थाउजेंड रुपीज। तो वो हम्म। बहुत बढ़ जाता है। सौरभ, एग्जैक्टली। सौरभ सर इज सेइंग आई डिड द सेम मिस्टेक। ओके। वो नहीं, काफी लोग यहाँ के नहीं पता रहता। यहाँ पर ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, जो सीए लॉयर्स आप जो पूछ रहे थे, यहाँ पर क्या है कि यही प्रॉब्लम है। मतलब प्रॉब्लम क्या है, ये अभी इकोसिस्टम इतना मैच्योर नहीं है। हम्म। अब तो फिर भी थोड़ा लोगों को आने लगा है, लेकिन पहले तो बहुत ही प्रॉब्लम था। तो ये चीज होता है कि अगर आपने डायरेक्टली अपने अकाउंट में ले लिया और आपने अपने शेयर उसको ट्रांसफर कर दिया, तो वो सेकेंडरी इन्वेस्टमेंट हो गया, सेकेंडरी सेल हो गया। वो हम्म। आपने अपने प्राइवेट शेयर उसको बेचे हैं, तो वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स में आएगा, या शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स में, जो भी आपका ड्यूरेशन होगा होल्डिंग का, उस हिसाब से। और फिर आपको 20% से 15% जो भी इंडिया में टैक्स रेट चल रहा है, उस हिसाब से आपको टैक्स भरना देना पड़ेगा पड़ उसका। जाएगा। श्रेया हैज ऐसा। ए क्वेश्चन एंड इट वुड बी लास्ट क्वेश्चन फ्रॉम आवर साइड। Cool. विकास, हमने बहुत ज्यादा टाइम ले लिया तुम्हारा। श्रेया, यू हैव अ क्वेश्चन। Hello, Vikas sir. Hello, अच्छा everybody. अच्छा। हाँ, Okay, actually, I'm Shriya, हाँ, and I am very enthusiastic for making impactful changes in the lives of students. हम्म, And that's why I am also passionate to work in educational domain, हम्म, specifically in career development. हम्म, So, Vikas sir, actually, I want you to हम्म, assist me or हम्म, give me some golden advices for हम्म, me being a 16-year-old girl and a हम्म, merest beginner. हम्म। ओके कूल। सो सबसे बड़ा स्टार्ट है स्टार्ट सेलिंग, मतलब क्रिएटिव ब्रांड। अगर आप अभी 16 साल के हो, और आई बिलीव अभी आप 16 साल के हो, तो स्कूल में ही हो। Yes, sir. और हाँ, सो
and career development is just very good. You're thinking in an entrepreneurial way, very, very good. Don't stop it. So my advice for you is start selling and start creating your brand online. The best thing you can do is आप अपना एक ब्लॉग खोलो, जो भी आप करना चाहते हो उसके बारे में लिखना शुरू करो. इंस्टाग्राम खोलो, इंस्टाग्राम पे अपना एक पेज बनाओ और उसमें जो भी आप बेचना चाह रहे हो उसके बारे में पोस्ट डालो, उसके बारे में इंफॉर्मेशन डालो, फ्री में अवेलेबल कराओ, और एक मिनी ब्रांड बनाना शुरू करो. लिंक्डइन पे जाओ, लिंक्डइन पे अपना पेज खोलो और वो ही नॉलेज स्निपेट्स वहां डालो. सी, startup is all about doing business and business is all about selling. आप जब तक लोगों के सामने, एंड सेलिंग इज ऑल अबाउट विजिबिलिटी. अगर आप जब तक दिखोगे नहीं तो बिकोगे नहीं. तो सबसे पहले तो दिखना जरूरी है. कुछ भी हो, मतलब लोगों को कितना भी क्लीशे लगे, वो क्लिंकी लगे, थोड़ा सा लोग उस पर मजाक भी करेंगे कुछ तरीके के तरह के लोग कि बहुत ज्यादा ओवर प्रमोशन कर रहा है या कुछ कर रहा है, बट यू हैव टू बी इन फ्रंट ऑफ योर पीपल आईज. अब वो एड्स लगा के लाओ, उसमें आप एक्ट्रेस को डालो या खुद एक अपना इंस्टाग्राम पे पोस्ट बनाओ और वो डालो. विजिबिलिटी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. तो अभी आप इस स्टेज पे सबसे जो इजी चीज कर सकते हो, जब तक आप और मैच्योर होते हो अपनी पोजिशनिंग में, अपने प्रपोजिशन में और नल करते हो, द बेस्ट थिंग दैट यू कैन डू इज बिल्ड योर ब्रांड अराउंड व्हाट यू वांट टू डू. बी अ नॉलेज एक्सपर्ट ऑफ दैट. That's it. Thank you, Okay, thank Vikas. you. It was a brilliant discussion and it was an eye-opener for many of us. So remain in connect Yeah, and cool. है ना? And these things that you have shared with us will really help a lot of people over here. Thanks a Cool. lot. Thanks a lot. Thanks for Thank calling. you everyone for Thanks. sparing so much time with us. Thank you. Bye.